workshop on chemistry for a sustainable future, organized by Department of Chemistry under the patronage of Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, and National Academy of Sciences. Day 1 of the workshop had been very illuminating, loaded with knowledge and emerging technologies in chemistry for a sustainable future. Without any delay, I would now like to call Professor A.K. Ganguly sir for his talk on photocatalysis for degradation of organic industrial effluents. Good morning, everybody. So, this is the second talk after my first talk yesterday on green hydrogen. Today I will be talking on so today I will be talking on photocatalysis for degradation of dyes, like organic dyes. As you know, many industries use chemicals and they also use metals. So most of the rivers which are close to industrial towns like Kanpur or many parts of Tamil Nadu, near Coimbatore, most of the cities where a lot of work goes on, say on metal plating, on manufacture of leather goods, which is popular in Kanpur. There are certain chemicals which are released, and these make it to the river. That's why many of the rivers are very polluted. It can also make it to the groundwater, and so many parts of Punjab have a lot of issues with cancer. That's because of heavy elements. So West Bengal, Assam have problem with arsenic. Punjab, Rajasthan have problem with fluoride. Fluoride poisoning has a lot of issues. You can look up Google pages how your hands and all will be affected by arsenic, and the fluoride is a different problem. So there are lots of chemicals which in small quantities may not matter, but in large quantities, if you eat or drink, you will have lots of diseases. So you can have organic effluents, that means organic compounds, which we use in our laboratory to do organic reactions, but in large quantity, if it goes into our body, it's not good for us. Similarly, metals. There are lots of metals which are very toxic, like lead, mercury, thallium, arsenic, I told you, is very poisonous. Selenium, very toxic, very poisonous. But some metals in small quantities are not poisonous, in large. Chromium is a metal used in the leather industry, tannery industry. So there is a lot of chromium pollution in our rivers near Kanpur and all that. So government has been trying to do a lot of things. Organic pollutants, because we use a lot of organic dyes. Okay. So today's talk, I will not talk on how metals we remove from water. We purify water for making it drinking, right? So there are lots of processes available in the market today. You can recycle wastewater, but you must have a recycling plant. Most places in our, other than big cities and all, we don't have good recycling plants. And so you have to be very careful what water you drink. And that's why now in everybody's house we have RO water, right? But RO has also its issues. It removes all the minerals. So now we have RO plus mineralizer. That's what the water you have to drink, because you need some minerals. So if you understand science, you are not blind. Koi sa bhi pani le lo, koi sa bhi RO pi lo. You must know what you are drinking, right? Because it adds to your health. So you must know what kind of minerals are good for you and what quantity. Today I will not talk on metal removal. I will talk only on organic compounds removal
by a process of catalysis which everybody studied in schools from class 8, 9, 10, we study catalysis. But this is special because it uses photons. So it is photocatalysis. It's not catalysis by chemical. Catalysis because light falls and does some processes. So this is photocatalysis. Okay. So this is what you study in school in 10th, 11th, I think. What is a catalyst? A catalyst speeds up the reaction of a process. How does it do that? You have an activated process and the catalyst lowers the energy of activation. If you have studied in school, you have been taught properly, you know what is the difference reaction energy and what is the difference with activated energy complex. So a catalyst doesn't change the delta H of reaction. A catalyst changes the energy of activated, lowers the energy, makes it easy for the reaction to move ahead. Catalyst can also increase the energy of the activated complex. That's called a catalytic poison. It is slowing down the reaction. So both is possible. It can enhance the reaction or it can slow down the reaction. Okay. So plants also work. Photosynthesis yesterday was discussed here, where you convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen using solar energy, right? And we can also help in maintaining the environment in processes which today is very important, how to recycle carbon dioxide. So world's biggest companies are working on how to recycle carbon dioxide. The applications, I won't tell you, in every field there is application. So one of the classic processes for catalyst, as you know about fertilizers. The process, because huge amount of fertilizer is used in the world. You need a process which is efficient and fast. So many fertilizers are produced through activated processes. Okay, so there are many catalysts which are very well known: palladium catalyst, platinum-based catalyst, nickel-based catalyst. So there are lots of catalysts which is normal textbook chemistry. I'm not going to tell you, all of you know. I'm going to discuss only photocatalysis. So two of the major reactions of light, one is photosynthesis, the other using light, photocatalysis. So you have an organic compound which under light you want to break it down. So you want to break it down because that organic compound in that quantity is not good for us, and so break it down into small carbon-based compounds. Which can be used for applications. So if you compare two reactions which are most famous, any student of science should know. One is photosynthesis, which is how water you can split into how plant makes sugar, that is glucose, from carbon dioxide and water, and how we can in the lab split water, which I discussed yesterday, using energy. Here we are using solar energy. Both are endothermic reactions. That means you have to give energy. So in the plant-based reaction, for 1 mole of oxygen, which produces 1/6 mole of glucose, requires nearly 500 kilojoules of energy. Whereas if I want to split water, I need 237 kilojoules per mole of energy. Okay? This is textbook chemistry. If you want, energy can be in units of kilojoules, units of kilocalories, and electron volts. So 1.23 electron volts converts to 237 kilojoules. Okay? Or 500 kilojoule per mole is approximately equal to 120 kilocalories. These numbers are common for all scientists. You just don't have to worry. You grow up, you know how to change these numbers. Okay? So you have to give energy
whether you do artificial photosynthesis, which is in the lab, or you naturally do photosynthesis, which is in the plant, both require energy. And in the lab, where we get the energy from solar energy, plants also use solar energy. Now we use semiconductors to trap the solar energy. So whatever solar light is coming in the lab or in the industry, in a plant, how will we catch the solar energy? You need materials which are called semiconductors. Now why semiconductors? Why not metals? Because metals don't have a band gap. The electrons in the metal are in a band or orbitals which are continuous. So you study in school orbitals, and when you are young you study hydrogen atom, it has some orbitals. When you grow up in 11, 12, you are taught molecular orbitals. Okay? When you are in postgraduate chemistry, master's level, you are taught from molecules how you go to cluster, 100 atom cluster, 500 atom cluster. What will happen? You'll have 500 orbitals, 1s orbitals. If you go to a solid, you will have 1 million orbitals, 10 million orbitals. So these orbital energies will become continuous. And this continuous range of energies is called a band. So in solids, in life, most of the things that you see around you are solids. You will have a continuous band of energy. So you have a lower, like you have an orbital which is bonding and an anti-bonding in molecular orbital theory. Like that, in solid, you will have a valence band and a conduction band. In semiconductors, there is a gap in the two energies. In metals, there is no gap. So you cannot move, you cannot trap the solar energy without moving an electron from a lower energy to higher energy. So to do that, you need a gap. And that gap is present in semiconductors. That is why semiconductors are important the world over. Okay, the whole world works on semiconductors. Now India is going to have the first semiconductor plant somewhere, for which several $100,000 or $10 billion industry is going to come to India first time, because all semiconductor chips are made either in US or Taiwan, and all your products have semiconductor chips. So India is going to have the first semiconductor manufacturing plant in India. So you need semiconductors to trap the solar photons. So the solar photons have wide range of energy from 250 nanometers. This is not energy, this is wavelength scale. So wavelength 250 is in the ultraviolet. In physics class you must have studied. And you go to higher wavelength, you are going from ultraviolet to visible to near IR and IR and far IR. Okay, that means you are covering from infrared, extreme end of infrared to extreme end of ultraviolet. The solar radiation has all these wavelengths, but the maximum number of wavelengths, the intensity is high in the visible region. Okay, so when solar radiation is falling on the semiconductor particles, semiconductors are solid particles or a film or a block of semiconductor, then these photons generate electrons and holes. And if I can use electrons are reducing agents. Okay, holes are the opposite, absence of electron, it's a oxidizing agent. So what will holes do? They will produce oxygen. What will electrons do? Produce hydrogen. And how will you produce hydrogen? Because you have water. So water can give you protons. So protons, when they meet electrons, they will give hydrogen atoms. And two hydrogen atoms will give you hydrogen molecule. So that's the process of water splitting. 1 mole of water splits, right? Or will give you how many moles? 1 mole of water will give you 1 mole of hydrogen and half a mole of oxygen. So you need 2 moles of water to produce 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. So that happens. This is the band diagram. This is called the band diagram. So this
is the conduction band, this is the valence band, and this gap in energy is filled by the energy of the photon. The energy of the photon should be higher than this band gap energy. So this band gap energy changes from material to material. So if you have zinc oxide, it will have some band gap. If you have silver oxide, right, it will have a different band gap, which is semiconductor, right? So TiO2 will have a different band gap, and your energy should be higher than the band gap energy to push the electron to that excited state. So a lot of research is done in the world on photocatalysts to design different types of photocatalysts, photovoltaics and photoelectrochemicals. So if you use only light and a semiconductor, is called photocatalyst. If you use light as well as electricity, you are using voltage, then it is called photoelectrochemical. Okay? And if you don't use light at all, you can still do it. You are using electricity. That's called an electrochemical cell. So you can do electrocatalytic water splitting, photocatalytic water splitting, photoelectrochemical water splitting, photothermal water splitting. That means here you are using light to excite electrons. If I use light to heat the water, that's called photothermal. That can also give rise to oxygen and hydrogen. But you have to heat the water to heighten it. You have to focus the photons, considerable amount, which if you just hold a beaker of water out in the sunlight, it will not happen, because there are very few photons for it. So you have to have parabolic mirrors all around, and light is concentrated. It's like you're putting a magnifying glass. Same thing you have to do at a large scale. So you have a room full of mirrors, and at the center, suppose you have a large pond of water. Then you have to focus the photons into the pond of water and raise the temperature. Then you can do thermal water splitting. So this is in more clarity whatever I showed there, right? I have expanded that, so you can see here it is appearing very smooth, but if you look carefully, there are some gaps. So certain energy is not available in the solar spectrum, or the intensity is low, but some are very high, like visible region. So you can choose that region. If you have two materials, one has a band gap here and one has a band gap there, then you can add both of them. Then what will happen? You will capture these photons and you will also capture. This is called a tandem solar cell. So the world's best solar cell is a tandem solar cell. Means it has got 3 or 4 semiconductors aligned, so that you can capture photons from this energy, photons from this energy, and so you can capture different energy photons by using different materials in the same solar cell. So that is the world's best cell, and that gives 50% efficiency. What it means, out of 100 photons, 50 photons are used in the photocatalysis. But most other processes will have an efficiency of 20%, 25%. The solar cells we use, which you see on rooftops, they are very poor quality. They are hardly a 4% efficiency. That's why they are very cheap. But in electronics industry, or gadgets which are very powerful, so you want to spend our something going to the moon or something, they have very high efficiency, the solar panels. So they have to be made in a different way. So we use what is called tandem solar cells. So what happens when the photon falls? So if one photon falls, at the site where it falls in the semiconductor, it creates electrons and hole. And this electron has to move to the place where it has to do its reaction. So its reaction is reduction. So it has to move where oxygen is there available. Okay? So if oxygen is very far away from the site where the electron is produced, then in between there will be a lot of scattering. That electron is very
moves very fast. Electron moves very fast. So and it will interact with so many atoms on the product. So this electron may not be able to reach where oxygen is present. So you lose that electron. If you keep losing electrons, the efficiency will go down. So you have to prepare your device in a manner that this electron is able to move to the site of oxygen very fast. So that is the design of the device. That's the engineering that you have. Similarly, the hole has to move to a different site where proton, you have to make hydrogen. Now both of them in the same site will not work because electron and hole will combine and then you will get light. So you don't want electron and hole to combine. Okay? So at this site you are having electron and hole, and basically hole stays in the valence band and electron is pumped to the conduction band. Okay? And the energy of this electron should be such that it should be easy to transfer to oxygen molecule. So it should be above the energy of an orbital of oxygen molecule so that it can be transferred. The hole is reverse. It has to be below the energy. The hole is positively charged. It behaves just the opposite. So this, I told you, once electron and hole is produced, what all things to be done? You have to take care that the surface reaction sites for oxygen is available. You have to suppress the recombination, and you need to have charge separation and migration to the surface. Sometimes, so this is a semiconductor particle, just a diagram to visualize, okay, to understand. So this is a semiconductor particle. Sometimes we add other particles to improve the process. These are called co-catalysts. So here I can have a co-catalyst. Many times these are metal particles, say platinum or silver. So small amount of metal particles act as a co-catalyst to improve the transfer of electrons and holes to the water so that to produce oxygen and hydrogen. Okay. So overall, this process requires an energy which should be more than the gap required between water to split. So this energy, what you see, this dotted line, what you see between 0 and 1.23 electron volts. This is in volts, okay, against normal hydrogen electron. So this dotted line is the energy you require to split water, 1.23 volts. And any material having more band gap will be able to do this. So you see all these materials, cadmium sulfide, cadmium selenide, tin oxide, titanium dioxide. These are all good materials because they have a band gap which is higher than the gap required to split water. So what is the minimum energy to split water? In terms of kilojoule per mole, it is 237. In terms of electron volt, it's 1.23 electron. It's the same energy expressed in electron volts or in kilojoule per mole. And you need a semiconductor which has a higher band gap because it will trap photons of energy which is higher than required for water to be 1.23. So you need to know these numbers, because if you choose a material which has a band gap of 1.2 electron volts, then that will not work because it will only absorb 1.2 electron volt of energy, whereas you need more than 1.23 electron. So you see the band gap energy for the most popular materials which are used as semiconductors, because these are cheap materials. Cheap means it is easy, otherwise many semiconductors can be very expensive. Right? So these are available in the world to a large extent, and they have band gap between say 3, 3.2 and all. Anything above say 2.8, 2.9 electron volt
falls in the ultraviolet. So these are all in the ultraviolet. This is in the visible region. So preferably we want materials in the visible region because that is where the sun is giving maximum number of photons. So you have to control all these things: band gap, the movement of electrons and holes in the semiconductor, which is called carrier transport, the nature of the material, because if it is crystalline or disordered material like amorphous, the properties will change. So TiO2 can have different structures. Same material can have different structure. It has different band gap. And TiO2, if I make glass, we have a different band gap. So if you make a glass which is an amorphous solid, in school you must have studied what is a crystalline solid, a regular arrangement of atoms. The glass is disordered. There is no regular arrangement of atoms. Say if you have a glass of titanium oxide, it will have a different band gap, right? And if you have same material can have different structures, like carbon can have graphite, diamond, they are all carbon, coal, but they have different structures, right? Similarly, TiO2 can have different structures. One is called anatase, another is called rutile. The one which is used most is anatase. Okay? The one which is available in the world most is rutile. In the lab, we like to make anatase. It's small particle size, nanoparticles. It has some better properties. But in the world, if you just mine titanium dioxide from the ore in the mountains or someplace, that titanium oxide is in the rutile. Okay. So you need to control all this surface area. So I said why we use anatase form, because it has a high surface area. So higher the surface area, higher is reactivity. That's in chemistry we teach. Increase the surface area, your reaction rate will increase because you have more particles on the surface. Okay? So surface area large, which is like powder, you know, it will spread all chalk powder, right? Many times you have seen. That is, it flies because the particle size is very small, right? But if you have same chalk, which is large particle, it will not fly. Large particles. Okay? So very, very small particles, sometimes you can see in the, if you stand outside, you can see dust particles in the rays of the sun. So that size is around 2.5 micron. The size that we can see with our eyes in the air, that size, so dust particles are, which you can see, is around 2.5 micrometers. Right? Smaller than that, you need microscopes to see that micron. So many of us work at very small size. We make in the lab 10 nanometers, 5 nanometers. So you cannot never see with your eyes. You have to look under a powerful microscope. Your semiconductor has to be chemically stable, right? Because if it is not stable, you cannot do this reaction 1,000 times, 10,000 times. You have to use the catalyst many, many times, right? So photoelectric chemistry, water, this is a classic reaction by Fukushima and Honda, who first showed this in 1972. There were earlier reactions, but they were not reported that aggressively. So this is what you do. You have a photoanode. It's a titanium oxide coated on some electrode. Another side is platinum, and you apply a voltage bias, and electrons will go from this to that. This is called you have to shine light. So this light is UV. So lambda is greater than 415 nanometers, because that is the band gap of titanium oxide. It is around 3.2 electron volts, and you need light which has energy which can overcome that. So you use ultraviolet radiation, and this process can be done. This is the paper. This is the setup in the lab. If you want to do, you can use for UV radiation, UV source
In the lab, we don't use sunlight. We use our own source of energy. We can create in the lab any energy. So we can create UV, we can create visible. We can have a machine which creates any wavelength. That's called a solar simulator. Mix the energies according to what you want. It will give you exactly what the sun is producing inside the lab. It's called a solar simulator. Also, the solar's energy will change depending on the density of the air outside. In Jodhpur it will be different, in Delhi it will be different. So we have a standard which is called air mass. So we say air mass 1.5. This is world standard. Air mass 1.5 means it will have some criteria. Air has to be of this kind. So many molecules per liter. So many molecules per cc. How dense is the air? So if you have to fix, when you do experiments in the world, you have to fix some criteria. Otherwise, air here is different than in Greenland. So the two experiments cannot match, right? So you have to fix the quality of the air. So you fix the quality of the air, you fix the wavelength. If you use xenon lamp, you know what wavelength you will get. If you use mercury lamp, you will know what wavelength you will get. And you use a solar simulator, you can tune like a radio any wavelength that you want or a mixture of it. And you put your sample and that light will follow it. It will look like that. So that's a photocatalytic reactor which is working under some radiation it is producing, lambda, which will fall on your sample, and then we will do the measurement, and what is happening to the organic compound in the presence of the semiconductor. It will degrade the compound because electrons and holes are being produced by the semiconductor. Now you are not studying water splitting, but you are seeing whether the organic compound is being broken down by the waste, because you want to do away with the organic waste. So it will break down the organic compound. So these are some materials. These are called TiO2 nanoparticles made in our lab. They have different shape and size, etc. We can control. So this is not what you can get in the market. This has to be made in the lab. So when we do that, you see, yesterday we were being shown colors using a laser, right? So this is a dye, which is rhodamine B, and if you put the dye first, you will get this color. Once I pass light, it will break the dye, so that color will be lost. So what is the concentration of the dye you can measure experimentally, and the concentration goes down because the dye is breaking down, and how fast you can break it down makes your process more efficient. And how many times I can do this? So I take one solution, I do this, it breaks down, I take another solution, it breaks down. How many times the same photocatalyst, the TiO2, can do this? So you see we did this once, twice, thrice, four, and it is, but you see it is going down to some extent here, nearly say maybe 60% or from 1 to 0.4. So nearly 65% has been lost of the dye here, but here only say 55%. So the catalyst is getting less effective with cycling. You can, as I said, you can have two catalysts with different band gaps. So there are many designs which is called engineering the band gap. So we can engineer, one catalyst has very high band gap, the other catalyst has band gap within this. I can have a catalyst with band gap such that the conduction band of this is above this, valence band of this. I can have another model where the conduction and valence band of this catalyst is above the conduction. So I can design several types of materials, but I have to know these values. This we get experimentally by doing some studies where we study the scattering of light. So it's called diffuse reflectors.
You would not have heard about this. We pass light, light scatters. From that, we can calculate these edges. This is one way, but you can do other techniques also. You have to find out the conduction band edge, the valence band edge. For any material, I can find out. There are hundreds of. The world is very far ahead, as you know. We can do experiments on Mars. So on Earth, we can do many, many experiments. Only you have to spend money. Many of these machines will cost starting from 20 lakhs to something like 10 crores. So all these machines are available in our institute. So we have this equipment worth 600, 700 crores in our institute. So you can use any of these machines and you can study more and more. This is how, I won't bother you with this. I'll just show you one of the designs that we made in our lab. We made particles like nanoparticle, like rods, which you can't see with your eye. You have to see under the microscope. And on that rod we put some small particles, okay, and created energy levels that one is above this, the other one is above that. So this is one kind of heterostructure, two semiconductors. So this is the heterostructure. Conduction bands above this. Why we did that? Because we chose one visible light photocatalyst, band gap is smaller. The other is a common photocatalyst, but the band gap is high in the ultraviolet, which is not good because very few photons are there in ultraviolet. So we are using this one to help this do the catalysis. Because this is cheaper, we need that, but this is more efficient. So we couple the two and we make it, this is the chemistry, how you make it. One on top of the other, okay? So we make a shell on top. This is called a core shell structure. And then we study, this is under high resolution electron microscope. So electron microscopes, I don't know whether you have seen anywhere. Normal optical in biology labs are this small, right? Electron microscopes are like 8 feet, 9, 10 feet. And it uses very high voltage. Okay? The latest electron microscopes in the world can see smaller than an atom. You can see inside the atom also. But they cost 30 crores, one electron microscope of that kind, 30 to 40 crores, one machine. We also have in India at least 20 such machines are there. So this is using a electron microscope, not the 30, 40 crore, but this microscope maybe costs 6 crores or something. So this is called high resolution. You see these lines that you see, each line is a line of atoms or cluster of atoms. Okay? But if you go to more powerful microscopes, you can see individual atoms. Right? And you can see there is an interface. On this side are these rows of atoms of one semiconductor. On this side you have rows of atoms. And what has this done? As you keep increasing the amount of cadmium sulfide, which has a smaller band gap, which is more efficient, the absorption band, that means where is the photons it is absorbing. Earlier it was absorbing at 372 nanometers, which is ultraviolet. Now I keep increasing cadmium sulfide on top. It moves to the right. That means to moves to higher wavelength, which means lower energy, which means to the visible. So from ultraviolet, now my material is moving, can absorb photons from the visible. That's what we wanted. We want the material to absorb from the visible. And what does it do? It helps in the photocatalysis. So the red one is the one which has the 465 nanometer band gap. And the red one is the fastest decrease in the concentration of the dye. So it acts fastest on the dye. You can calculate this. This is chemical kinetics. If you have studied in school, it's a first order reaction, pseudo first order. So you neglect this amount of solvent. This is a pseudo first order reaction. You can plot the rate equation, right? You plot rate constants and all that, right? You can also convert into how much of the chemical is being degraded. So this compound, which has 465 nanometer, degrades 98% of the dye. The other one degrades 92. Pure zinc oxide degrades 70%. Pure cadmium sulfide degrades 30%.
So that means the pure compounds are not as good as the designed compounds with two semiconductors. This we can show in many materials. I showed using zinc oxide, cadmium sulfide, zinc oxide, silver sulfide. Just keep thing in common that one should have a band gap in the visible. Okay? So if you do this, and these are the mechanism. How do we follow the mechanism? Using, you have to capture these radicals. You know, radicals are being produced. What are radicals? Which has an unpaired electron. The radicals are very unstable. Right? In chemistry, when we reading in the textbook, one electron goes there, this. But how we actually see them in the lab, how we capture them in the lab. Okay. So we capture them through equipped machines which are very fast. They are detectors which can detect electrons. So one of such machines is called a gas chromatograph mass spectrometer. That means whatever is passing through, whatever is forward, it will trap and calculate the mass. So we can calculate the mass of silver sulfide with the electron in the conduction band and this. And whenever you produce something like this is a radical anion, O2 1 dot minus, is called a 1 electron unpair. So this will have some weight. It will tell you how much concentration is there. It will also tell you something like that, HO2 dot. These are very low stability species, don't stable in air and all. But in the machine, you can find out all this. They may be stable for say microseconds or milliseconds, and it will trap that. Okay? You will also do other measurements. There are tens of other techniques one learns when you do research, like ASR spectroscopy. You can do any of these and characterize any material, even short-lived species which are stable for picosecond or femtosecond. So we know all these things. I will not bore you much to tell you we design many. These are all electron microscopic picture because you have to see what I made. So all this is a rod, nanorod. It is only say length is 100 nanometers. On that there are particles of say 5 nanometers. How to see that under a high resolution electron microscope. So you can see that, and how to find this picture is not clear. It tells you where is titanium, where is cadmium, exact position. It's called mapping. It's like you map where is India, where is China, like that on the particle which you can't even see, which is very small, but under the microscope I can see everything, every atom, where is titanium, where is oxygen, I can find. It's called, through X-ray techniques you can do, it's called X-ray mapping of the material. So this is again change in color. You see it's a dark blue. As it is being degraded, its color change. So the organic dye is fading. This is one of the examples how we show photocatalysis. So many such things. So what I am showing is one rod coated by another material coated by more complex. So you can design many things, but you have to make it in the lab. Not easy to make because these are in nano size. Okay? And then you study their properties like photocatalysis. This is photoluminescence. This tells you electron hole are stable or unstable. So if it is unstable, you will see lots of peaks because they are combining. So you will see a lot of intensity of light. But here there is very low intensity, which means in this material electron and hole are not combining. That means this is a better material. So this material, the blue one, is the best material out of these because there they are getting a lot of luminescence. Here very low luminescence. So this is a good material. So I will stop now. So these are many things you can see. You can make many such particles and study the degradation of the dyes, do the kinetics, find the rate constants, do cycling studies. You can go 10 times, 100 times. In industry, they will be doing 10,000 cycles because you have to make for the industry is different than what you make. So
This is again, you see, is a color, it's changing. These are different, it's a cup-shaped particle. The size of the cup, the diameter, maybe 10 nanometers or 20 nanometers. We can do this in nano channels. We can make channels, like you have pipes. The pipes are nanometer, micrometer dimensions. And we can study reactions in the presence of light when water is flowing. Where will it be used? Suppose I have a small device in my stomach and some chemical is being passed, and one of the chemicals is toxic. Then I can clean that using some light on that chip which is embedded in my body. These are already done 10, 15 years back. They are already in the market. This is, I want to make huge amount of hydrogen and oxygen. So I put it on my roof like that. Okay. So whole thing is coated by a photocatalyst and I generate hydrogen. Large scale generation of hydrogen. Similarly, large scale of degradation of organic compounds. So how the channels are made? You need labs like these are very expensive labs. But in IITs we have such labs. These are called fab labs. There is the semiconductor industry which is coming. It will have all these fab labs. There are very expensive labs. So you see these droplets are moving, and this is a very large size droplet. That's why you can see with your eye. But we make very small, you can't see with your eye. But this is what happens. Suppose you have to have a machine in which automated urine sampling is being done. You want to find out blood glucose in droplets. You can have this kind of a chip which will automatically detect with a sensor how much blood glucose you have, etc. So we did many of such things. We made particles within the channels, study within the channel the degradation of the dye. We pass the dye, okay, and put a light on top and it's degraded. So you put the light on this also. It's called a microchip if the channels are micron sized. It's called a nanochip if the channels are nano. And you see the degradation. This is the absorption due to the dye. Initially very high because the dye is there. After some time the intensity of dye goes down. So in 12 minutes the dye has gone down, 80% of the dye has been degraded within the channel. Okay. You can degrade dyes without using photocatalysts also. So these are materials, this alumina multi-walled carbon nanotubes. This is standard, industry likes this because very cheap. So we made a lot of this. To remove, this does both the things. I told you in industry, there are organic effluents, there are metal effluents. Chromium is a metal effluent. So it converts methylene blue and it also converts chromium 6. So both the things using this combination. So we make large nodules of these. It's alumina based, so very cheap. But we add little bit of carbon nanotube to catalyze the process. So this is the process. Under 1 pH, it will degrade the chromium, and another pH, it will degrade the methylene blue. Both it will do simultaneously. This is another, in the industry, there is a lot of cobalt in certain industries. So cobalt comes into the water. We use this, our material, to process this, and this size of these particles are large. These are not nano. These are bulk particles, and we can convert. This is one thing to show that you can convert this this hydroxy group to a ketonic group using this particle also. So not only you can process cobalt, but you can also do some other catalysis. I will stop here, I think. So this is number of patents, how many people in the world are working, can be seen from the number of patents being filed in the world. So till say 1995 there were hardly 5-6 patents, whereas after 20 years there are 600 patents, okay, per year, and now it's
around 1200, 1300 patents on this subject. Most of the patents are from China, Japan. Initially they were all from Japan, if you see, but now most of the patents are from China, and the US and all are very small in that. So thank you very much for the time. Thank you, sir. Your lecture has made us understand the details of photocatalysis. In this lecture, we have learned a lot and look forward to a long association for consistent learning from a scholarly personality like yours. Now, I would like to request Professor Uday Mehta for his talk on molecules that seem to defy rules. Is there power supply here? Can you hear me? Excellent. Thank you very much. Today, before I begin my presentation, right, you can make it full screen. And I will change some parameters here. I'll kill this one. Right. Before I begin, I would like to say a couple of things about sustainability. One of them is that, we have been hearing for the last 2 days about solar photovoltaics, about the silicon solar panels on your rooftop, about how much space, how much sunlight Rajasthan gets in a year. Hopefully there wouldn't be too much snow during the summer. But then what we also need to worry about is that the silicon solar panels have an average lifespan of about 25 to 30 years. Okay? So all these gigawatt hour level solar panels that are being placed, installed now, your generation will have to worry about their disposal and recycling, and that's not going to be easy. So therefore, what I mentioned yesterday is about systems thinking. You should not just think about the present solving present day problem, but also what waste it will generate after 25 years and how to handle that. Okay, and that can become a very serious issue in the not so distant future. Okay, all right. Did any of you work on this problem? I didn't get any entry. No? You still have time. But then let me give you the answer. Okay. The molecular weight of sodium hydroxide is what? 40. KOH? 56. So the answer is not 40 grams and 56 grams. Okay, that's why I said, well, both are hygroscopic. But then there's a very important catch, and that's why I mentioned you should always read the labels carefully, okay? Particularly when handling chemicals, because sodium hydroxide in a purified form is 99%,
Okay, but even the purest KOH that you get in the market, if you read the label, it's only 85%. Okay, and I'll show you from an Indian product, it says greater than 84%. So the remaining 15% is actually water. So the answer will be 40 grams and 56 by 0.85, roughly 65 grams. Every day in the history of science, the history of chemistry, something important has happened, right? And today is no exception. So today, two very important people who got Nobel Prizes in chemistry were born. One is, have you studied adsorption? Whose name is associated with adsorption? One name, Langmuir. So Irving Langmuir was born on this day in 1881, and without going through other details, he got the Nobel Prize in 1932. Let me also ask you another question. I don't have chocolates. I gave away everything yesterday to the people who actually set up my experiments. Whose method was used very extensively for measuring atomic weights? Any name you think about, you have studied? Atomic weight determination? Because you know that made something very important to make the first periodic table. It's Richards, T.W. Richards. Okay? He was born in 1868. He made accurate atomic weight determination, also worked on electrochemistry and thermodynamics, and got Nobel Prize in 1914. So to celebrate their birthdays today, let's blow up virtually some hydrogen balloons. Oh, I need to set up the audio properly. I think it is set up nicely. Display audio, it should work. You know, when you test it, it always works, but in real life things do not always work the way you expect. Okay. Oh, now there is no display. 1 second. We'll sort it out. I think I was pressing too many buttons and the system got. Oh. Not sure what's going on, but then you heard the noise, right? I think that's important. Okay, let me go to the next slide. Okay. Okay, something is not right here today, but let me see. It's opening again. I will just jump to the next slide. One more important thing I need to do, because yesterday I was not able to show this experiment on thermochromism. Okay, but today I got, thank you very much, whoever got the hair dryer, and I've got this beautiful banana which some of you had in the morning in the dining hall, and then I've got this beautiful apple. So the banana is painted with the silver salt of AgI42 minus, whereas this one is painted with a copper salt. And you see one is yellow, one is red. Now I'm going to warm it up, because this is going to change color from yellow to orange. All right? And this happens at about 50 degrees. All right? And then if I wave it in the air to cool it, and the air is reasonably cool now, it will immediately go back to the yellow color. So this is what I call ripening of a banana. On the other hand, this is a little sad.
that this beautiful red apple will look like a rotten apple once I heat it. But then I have to heat it a little higher because this transition happens at 67 degrees. Okay. This is not going to happen to a larger extent because this hair dryer is not supposed to hit that high, then your hair will burn. All right. But you saw that the beautiful ripe apple became a rotten apple, but interestingly we got it back. Doesn't happen in real life though. Okay, so now let us get back to business. Yeah, lights down please. So today I'm going to talk about molecules that seem to defy rules. Now why am I talking about it? I'm talking about it because all of you, all the students, you have studied chemistry from your 11th, 12th grade onwards, and there are many principles, many rules that you have read, makes you think that you have understood all the principles of chemistry and science and so on. But then what you don't realize perhaps at times is that these rules are simplified at each level. At the high school level, many things are oversimplified, but you learn a little bit more about it in your first year BSc, second year BSc, and so on, and you get to know that there are exceptions to the rules. Okay, so that's basically what I would like to highlight to you, using molecules that you have seen and using molecules that are relatively recently discovered, which you have not seen. So these are, I would call, like VVIPs. We often have problem with VVIPs, right? And the roads and everywhere else. These are VVIM, very, very important molecules. So we'll talk about it. Now let me ask you a question on geography. Do any of the students know what I'm showing here? This picture, where is it from? It's called Table Mountain. Okay, I won't tell you where it is located. You go back and search and figure out. Okay, all right. Now rules are made to be broken, certainly in this country. I think in the campus rules are generally followed, right? All right. But rules are usually made to be broken. We see more of it on the roads in India than anywhere else, and everyone is in a hurry. So there are molecules also which seem to break rules, but what we will find out is that these are exceptions, and in fact the rules do not apply to them. That's why I call them like VVIPs, because many VVIPs think that rules don't apply to them. Okay, so the first rule is Bread's rule. How many of you have read Bread's rule? This is not bread like roti, B-R-E-D-T. Okay, Bread's rule, if you have not read, it tells you that you cannot put a double bond at a bridgehead. Okay, and the reason for it is that if you have a double bond in a bridgehead, that is like putting a trans double bond in a bridgehead. Normally, a double bond in a cyclic system like cyclohexene is a cis double bond. But here, if you look at the 6-membered ring here, it's a trans double bond in a 6-membered ring, which makes it very, very strained. But then people always try to make exceptions, try to find out if you can make a trans double bond. So almost 30 plus years ago, these scientists, they converted this strange looking iodo-bromo derivative into what they thought would be a Bread's anti-Bread's alkene. And then they reacted this with a molecule called furan, and this is like a Diels-Alder reaction. I'm sure you have heard about Diels-Alder reaction. It's a 4+2 cycloaddition. So the idea was that if such a molecule is produced, then furan as a diene will attack the molecule from the top and from the bottom, and it will produce these two resulting adducts. Indeed,
when they carried out the reaction in the presence of furan, they found that these two products were formed. That means that this anti-bread olefin was indeed produced under the reaction conditions, and it was extremely reactive because it is a double bond which has been twisted to make it trans in a small 6-membered ring. Now, in a 6-membered ring, a trans double bond is extremely unhappy. However, if you make the ring a little bit bigger, the trans double bond can aram se stay there. And such an example is shown here. This is a bigger ring size, but you see that there is again a double bond at the bridge head. This was also made more than 3 decades ago, and this double bond seems to be pretty stable as long as it is prepared in the absence of air. That's a bit strange because an alkene like a cyclohexene is indefinitely stable in air. And remember your high school chemistry, to make ethylene oxide from ethylene, what do? How do you make ethylene oxide from ethylene? If you study at the BSc or MSc level, you will say MCPBA, right? But the basic chemistry that you learn is that you can use atmospheric oxygen, silver catalyst, 400, 500 degrees. But in this case, this double bond is so strained that in air it spontaneously becomes an epoxide. That again tells you that when you put a double bond at the bridge head, it gets twisted and it's much more reactive than a normal hydrogen, normal carbon-carbon double bond. Okay, another thing that all of you have read is that in a cyclohexane chair form, have you studied conformations? Some of you have, not everybody. Cyclohexane, 6-membered ring, it doesn't stay planar. It becomes twisted in a chair form because that's when they avoid what is called torsional interactions. And usually a substituent always prefers an equatorial position rather than the axial position, because in the axial position it is not very happy because that is interacting with the hydrogens here and hydrogen there. And therefore, this equilibrium is always has a bigger arrow on this side. Now, what is not often taught is that this principle applies only and only for a mono-substituted cyclohexane. If you have many substituents, then things can be very strange. Now, let's see if we put 6 ethyl groups on cyclohexane. Okay, and they are all trans to each other. So it can have all the 6 ethyl groups in the equatorial form, or if I twist the chair, all the 6 can be axial. But then experimentally it was found they are all equatorial, very happy in this orientation. And then another research group, then they said, okay, fine, ethyl is all right, but what happens if I put a bigger group? What is the next bigger group than ethyl? Isopropyl. Okay, propyl and isopropyl. They said we will put 6 isopropyl groups on a cyclohexane, make them all trans and see what happens. So this is how it was made. I will not go through it, but then it turns out when they got the crystal structure of this molecule, they all turned out to be axial. Okay, not equatorial. Hexaethyl is all equatorial, hexaisopropyl is all axial. And since they had a crystal structure, that is the end of the story. Now, I would not like to tell you, go into the details about why this is more stable than the hexa equatorial, but then the point is the rule that
says that equatorial forms are always more stable than axial forms applies only when the substituents do not interact with one another. Okay, here's a question again. No prizes. What's the molecular formula of the molecule I've shown? I'll start with C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Then, students, you should answer this. Looking at a structure, you should know what are how many carbons, how many hydrogens, how many nitrogens. C7, then H14 and 2, right? Everybody agrees? You're right? You're wrong. Okay, you have counted 2 extra hydrogens because I have not shown any hydrogen here. And there are no hydrogens, it's a divalent carbon, it's a carbene. Okay, and it has this is the correct formula, and this is a carbene. You know, many of you have studied the Riemann-Tiemann reaction. In high school, you know dichlorocarbene is the intermediate. It's a 6 electron species, very, very electrophilic, very reactive, and so on. But then what happens here? This is a carbene that you can put in a bottle. I don't have it in my pocket, but in principle, this is a stable, crystalline, bottleable carbene. It was made nearly 30 years ago. And the reason for it is because the 2 nitrogen lone pairs are putting electrons into the vacant p orbital. So rather than dichlorocarbene, which is an electrophilic carbene, this in fact is a nucleophilic carbene. And this is also called nowadays NHC, N heterocyclic carbene. And this is used very, very extensively. I'll show you here. And it is used in many examples of organocatalysis. You might have heard about Grubbs catalysis, olefin metathesis. If you read it in your masters, you will find that this NHC, molecules of this kind, is also used as a ligand in many of these catalysts. Okay, one more question. Can you give an example of a molecule having a formula CnHn, but which does not have a double bond? You know, I want this session to be interactive, so I want response from you. You are all sitting so far. You should be in the front row. Any example of CnHn which has no double bond? Acetylene is not a right example because it has a triple bond, right? Okay, let me show you some example. So the formula is typically like CHN. This is an example. What is this molecule called? How does it look like? Looks like a prism, right? So it was called prismane. There was a time when benzene was thought to have this structure. You see it is C6H6, it doesn't have a double bond. Another molecule which was made in 1964 is called, how would you describe this molecule? Cube. So it is called cubane. I will come back to cubane in the next slide. So the smallest one, not the next slide, but one after that. Smallest one you can think of is like this. What would you call it? Tetrahedron. But the problem with tetrahedron, you know, this is known, but the problem with this is that it has got very, very strained rings. 4 cyclopropane rings you have put together, C4H4. So what happens is, let me show you with an example, that these bonds are so strained, once you cut this one, it just opens up. Okay, it just opens up. Incidentally, we played with some balloons yesterday. I should have kept some balloons, not normal balloons. Try to put 4 balloons of similar size together. Okay, tie them in one point. What do you think will be the shape of the 4 balloons?
it will be tetrahedron. They will all be like 4 bonds in methane, CH4, because that's the way each balloon is as far away from each other. Any other geometry will bring them closer to each other. Okay? So remember this. So the idea here is that if this molecule is very unstable, how do you make it stable? The idea was put a balloon here, balloon here, balloon here, balloon here, right? Big, in other words, you can't put a balloon on a small molecule, put large bulky substituents. So the idea was that if you put large bulky substituents, then they are as far away as possible. And if you cut a bond, they will not come closer to each other. They don't want to come closer to each other, and therefore the bond will not be cut. So with this idea, this is in fact very old, almost 40 years old. With this idea, this molecule was made. 4 tertiary butyl substituted cyclopentadienone, and upon shining light, it formed these crisscross bonds, and more light, it liberated CO, carbon monoxide, and then it produced a stable tetrahedron structure with 4 tertiary butyl group, like 4 balloons. Okay? And this is how the molecule looks like in a 3-dimensional representation. And you see that C4H4 is hiding inside, and it is surrounded by all these tertiary butyl groups. Okay? So this was, in fact, tetrahedron was a first substituent that was made in 1984. I talked about cubane, right? Now, there is some interesting story that happened that was published last year. So I'm telling you several small stories on molecules which have some interesting property. So cubane was made by Eaton almost 60 years ago. Okay. Now very recently, a Japanese group thought that if I put 8 fluorines, replace all the hydrogens, replace all the CH groups by CF groups, what happens? Idea is that, you know, fluorine is the most electronegative element. So it will, every fluorine, and all the fluorines are located outside the cubane. They are pulling electron density from the center of the cubane. And their idea was that if you make a molecule, you can actually inject an electron inside. You can put an electron inside. Okay? It can hold an electron and produce a radical anion. That was the idea, and last year, in fact, they published this one last year in the Science magazine. The title was Electron in a Cube, Synthesis and Characterization of Perfluorocubane as an Electron Acceptor. I will not go into the details, but this is a spectrum which is called ESR or EPR spectrum. If you have any unpaired electron, okay, that has got a spin. Spin can be down, spin can be up. So ESR or EPR is a technique by which unpaired electrons can be detected and their properties studied. So by measuring the ESR spectrum, this is what they got, and then they simulated, assuming this to be the structure, that is an electron inside C8F8, and you see that the simulated spectrum, the computer calculated spectrum, and the experimental spectrum are almost matching with each other, indicating that indeed it is the electron inside the C8F8 type molecule. Okay? This is the crystal structure of the parent compound, not with the electron. Okay? That again clearly shows that it is a cubane molecule. Okay, another principle that you all study in high school, aromaticity, right? So what are the requirements for aromaticity? 4n plus 2 pi electrons. Can n be 0? Students, you are not responding at all.
आप हिंदी में भी बोल सकते हैं 4n+2 रूल में n क्या 0 हो सकती है? Possible. You can have 2 pi electrons in a cyclic system. You can make cyclopropenium ion. Okay, that is aromatic. But another requirement is that you should have a cyclic system and should be planar. Planar नहीं हो तो p orbital का overlap कम हो जाएगा, नहीं होगा. But what is not often taught is that दो p orbital में अगर थोड़ा सा bend है फिर overlap sufficient हो सकता है. Up to 30 degree bending is allowed. So if you have a molecule which has lot of pi electrons, p orbitals, but because of steric reasons it cannot be planar, it can still be aromatic. So non-planar compounds can also be aromatic. I'll show you with some examples. This molecule, in the center you see 1, 2, 3 benzene rings, so it is anthracene. Okay? Now you start putting all these substituents. So what happens here is that there is hydrogen here, hydrogen here. दो hydrogen बहुत नजदीक आ गया, so the ring gets twisted. Okay, and this was the crystal structure showed it actually has a shape like this. So this side is this side, but you see this part has become twisted. So here, from this side to this side, the twist is nearly 66 degrees. So between the first and the second and the third, the average twist is more than 30 degrees. So that's what I said, you can have a bend of 30 degrees and still retain aromaticity. Now the person who worked on it, his name is Bob Pascal from Princeton University. He was not happy with this. He said, I'll make molecule with a more twist. So he made another one where the twist is actually 144 degrees. You see that now we have got 1, 2, 3, 4, 5 benzene rings in a row. Remember this pentacene molecule you have seen yesterday? Professor Shobhan Sen showed for fluorescence. So this is a pentacene, but you have put so much of large, I would say balloons, large functionality around it that it got twisted. And now 144 degrees. Okay, one more interesting class of molecules. If you take 1, 2, 3, 4 benzene rings like this, these are called angularly fused aromatic system. If you make it linear, it will be benzene, naphthalene, anthracene, tetracene, pentacene, and so on. But if you start fusing angularly, something interesting happens. 4 is okay, 5 is also okay. 5 is like this. Okay, it's angularly fused. The two ends are like my two hands. But now you put a sixth one. एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा. Huh? So that means there is a twist. Now एक ऊपर एक नीचे में बताएं, लेकिन ये दो स्टाइल में हो सकता है. My right hand is towards you और my left hand is towards you. तो इसमें फर्क क्या है? एक में left-handed twist है. You see you start from my right hand, which is here, go to my left hand, you go through anti-clockwise twist, and now clockwise twist. Okay, so these are molecules which have helical shapes. These are called helicenes. So this molecule was the first helicene that was made. It was called hexahelicene. It was made by somebody named Newman in 1956, and such molecules show very high optical rotation. You must have heard about optically active molecules, optical rotation, and so on. So such molecules show very large optical rotation. This one 3,700 degrees. Now that is old story that everybody should know. But more recently, you know, if you have two helicenes like this, two helicenes like this, and connect them together, what do you get? You get something like this.
In mathematical terms, what is that? How do you write? What is this symbol? Infinity, right? So these Japanese chemists actually made something they named infinitine. Okay, and that was last year. And you see the molecule is shown like this. This has got two right-handed helicins connected together. This has got two left-handed helicins connected together. So therefore, what I am saying is, not only can you have non-planar aromatic compounds, but you can play with them and make very interesting shapes and structures for understanding fundamental properties of such molecules. Okay, so here I am showing you a right-handed helicine, also called p helicine. P means positive. This is also a right-handed helicine, and you link them together and you get p infinitine. Okay, all right. These are some more details. Those of you who have studied IUPAC rules for naming, you will have a tough time naming this compound, because this is the IUPAC name. Okay? If you want to take up a challenge, try to name infinitine by the IUPAC rules. Okay? You should come with this name. Okay. Now something very simple. First, let me ask you, what are the reactive elements you have studied? Which are the reactive elements? Sodium, potassium, like the alkali metals. Anything else on the other side of the periodic table? What are the reactive elements? She said sodium. नमक तो मालूम है, हाँ? नमक तो मालूम है, तो अदर पार्ट ऑफ नमक क्या है? सोडियम छोड़ने के बाद क्लोराइड. क्लोरीन इज रिएक्टिव एलिमेंट. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन. You know, नमक में तो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, but I am talking about the elements. Sodium ion and sodium metal, chlorine, fluorine, iodine. These are all reactive elements. Do reactive elements occur in nature? नेचर में ऐसा मिलता है सोडियम, क्लोरीन गैस? नहीं मिलता है. You get only noble metals free. Even iron you don't get iron in nature, right? Except in the rail lines which are man-made, right? And structures. So reactive elements do not occur in nature because they always combine with something else. At least that's what people thought. But about 10 years ago, well, actually it's a old story. It was published 10 years ago. This is a rock. This is a rock. Actually, it's an ore of calcium fluoride, CaF2. CaF2 is often called fluorite, and it is used in various optical instruments. In fact, I will not be surprised if the projector has some lenses made from calcium fluoride, because fluorite or calcium fluoride, because this is water insoluble and has good optical properties. So this is an ore of calcium fluoride called antozonite, found in some parts of Germany, which was called stinking rock. Because when you break it, you get a bad smell. Okay, it was called stinking rock, but nobody knew what the smell was coming from. So when it was crushed, for 200 years, people could not find out what was causing the smell. 1816, smell on crushing, that was the first reported. Then people say it is HOCl, iodine, oxygen, ozone, fluorine. You know, fluorine was discovered or isolated only in 1886. Then somebody said in organic origin, fluorine, then arsenic, hydrocarbon, SO2F2, no fluorine, neither fluorine nor ozone. So it was not conclusive. That what is the smell that you get when you crush these rocks? So this research group in 2012, they actually made all these possible compounds, smelled them, and smelled the rock. Okay,
Then they came to the conclusion the rock is smelling like fluorine, F2. Now, if you publish a paper saying that I smelled and identified something, it was possible 200 years ago to get it published, but not anymore. So, the next best thing is to use a technique by which you can specifically identify fluorine or fluoride, and that technique is called NMR, because fluorine is an NMR active nucleus. Remember yesterday we talked about I. Rabi, who discovered NMR in 1944, got the Nobel Prize in 1944. The same technique. This is a picture of Mosa, who discovered fluorine. So, this is a technique by which they identify this particular signal that you see from the rock. There was evidence that F2 molecule was present inside the rock, and when you crush it, it comes out. Now, very surprising, why would fluorine be present in the rock? It turns out that these rocks also contain small amount of uranium-238. And you all know that uranium-238 is radioactive. So, it is the radioactivity of uranium-238 that converted calcium fluoride back into calcium metal clusters, which gave the brown color, and fluorine gas. And until you break, the fluorine gas was actually trapped inside the crystal. That was the first time elemental fluorine was ever found in nature. And in a nice package, calcium fluoride is the best container you can use for storing fluorine. Okay, here is another Nobel laureate. It's a Nobel laureate's day, it seems. So, I will not take much more time, maybe another 10 minutes, okay, because there is a little bit of an event at the end today, okay, like yesterday. So, here you see this gentleman getting a Nobel Prize in 1987 December. His name is Cram, okay. So, you may have read about Cram's rule or Cram-Ingold-Prelog rule. Kahn-Ingold-Prelog, oh sorry, that is Kahn-Ingold-Prelog, that is not Cram's rule. But Cram has some other rule, Kahn-Ingold-Prelog, you are right. Cram has another rule when you are making an asymmetric synthesis by adding an aldehyde, you add a Grignard reagent, you are forming a chiral center. So, Cram has certain rule that allows you to predict which of the two diastereomers will be produced. Cram has done many more things, okay, Cram. So, here he talks about a molecule which he says is the Mona Lisa of organic chemistry. You have heard about Mona Lisa? What is that? That is a painting in the Louvre Museum in France, okay, that is rated very high. Painted by whom? Leonardo da Vinci, right? Okay. So, he talks about basically this molecule, he says, is nothing but cyclobutadiene. Cyclobutadiene, 2 double bonds, right? Now, is it aromatic? Is it non-aromatic? Huh? Is it non-aromatic? No. What else could it be? It's called anti-aromatic. It's very unstable. But Cram said, I'll make cyclobutadiene. Okay. Now, cyclobutadiene, the problem with cyclobutadiene is the following. You can make it, but it reacts with oxygen. It is like an ozonolysis. It can become 2 acetylenes, that is a problem. Or worse is that if there are 2 cyclobutadienes together, they will form this dimer, and that will produce cyclooctatetraene. That is a problem. So, he said, I will do this reaction in the absence of oxygen. I will control the light, and then I will put this fellow inside this
little cage, molecular cage. So he built a molecular cage, okay, because he said cyclobutadiene is like a notorious criminal. I don't want two criminals to come together to conspire and commit this crime. And here the crime is two cyclobutadienes joining together. He said, if I keep them in an isolation cell, then two criminals will be separate. They cannot conspire, and therefore it will be stable. So I will not go into the story. He built this cage and made cyclobutadiene inside it, and by doing various again spectral analysis, he found indeed cyclobutadiene was made inside this cage as a stable molecule until you shine light, more light, or until you put oxygen there. These are some details here. Okay? Okay, so a little bit about food. Is khichdi a popular dish in Rajasthan? I know that you have many things that are very special to Rajasthan. I would love to eat some of them maybe next time. But khichdi is popular. How do you make khichdi? Chawal and dal, and then you add many other things, right? Chawal and dal are the basic components. Then you add some masala, you add sabji, and then you boil together. You make khichdi. Okay. So I'm going to talk to you about a khichdi reaction. Now, when you carry out a reaction in the lab, you are very careful. You mix two things together, get a product, then add the third thing, get another product, add a fourth one, get another product, and finally get your desired product. It's called multi-step synthesis. But in chemistry, there is also this idea that you try to put many things together. So this is what I will call khichdi reaction. But then you finally get only khichdi, nothing else. Okay? And a good one, good khichdi that way. So this gentleman has the world record for this khichdi reaction, in which he put all these 7 components together. Now, you know, it's done very, very careful analysis, because when you mix all 7 things together, only 2 things should react at a time, because more than 2 cannot come together. So all reactions are either unimolecular or bimolecular, fundamental reaction. Only 2 things should react, then the third one should react, then the fourth one, then the fifth one, like that. So he designed this one in such a way that out of these 7 reactants, they react only in pairs and in a particular sequence. And all that happened, and finally he got only 1 compound, and byproducts are only sodium bromide and 2 molecules of H2O. We were talking about green chemistry, right? Green chemistry is one where you do not produce any waste. One of the arguments is that, one of the requirements is that you don't produce any waste. And you say waste is sodium bromide, which you can reuse, and only water. Okay? Now I will ask you to find the mechanism for it. Okay? This particular magazine is called Resonance. It's a magazine, Journal of Science Education, and if you search for multi-component coupling and my last name, I wrote a small article in Resonance in many years ago, 1996, and it's freely available. So there the mechanism is given, but you try to figure out how these things can react to produce this complex molecule in a khichdi reaction. So this is your khichdi, final, nothing else. Okay, so I will skip the mechanism slide, and I'll go straight to the last example. You have all, somebody's watching video or what? You are not allowed to use mobile here if any of the students is using. Please switch off any other source of sound. It causes distraction for everybody. Okay, doesn't matter.
It's okay. It's okay. I think he got the message. You all have studied electrophilic aromatic substitution. Tell me anybody who has not studied, who has done science in high school and has not studied electrophilic aromatic substitution. Like Friedel-Crafts reaction, bromination, nitration, you have all studied that. But then nucleophilic aromatic substitution, that is very strange, because aromatic systems are electron rich and it will normally undergo electrophilic reactions. So it was shown by somebody who is very famous chemist called, his name is Eric Jacobson. He is from Harvard University. He showed a few years ago that you can have a concerted nucleophilic aromatic substitution. There are other types of nucleophilic substitution which go through an addition-elimination mechanism. But it showed for the first time that you can have concerted nucleophilic reaction, and this is a specific example where you go through an intermediate like this. You know, fluoride attacks, produces this intermediate, and then it forms replaces the bromine by the fluorine. I will not go into the details of why it happened like this or how it was found out. This was published in 2017, I believe. Okay, so that is the end of my presentation. I promise that I will finish in less than 60 minutes. But then I hope that I have been able to convince you that whatever principles you have studied, they apply to a large number, a majority of molecules, but there are exceptions, and sometimes scientists and chemists, they push the limit to make molecules which will be an exception, because by making a molecule which doesn't follow a certain rule, you actually learn how this rule can be extended or further refined, because we always make advances by eliminating errors. Okay, because fundamentally whatever I study now, I study today, is based on the knowledge I have today, based on the equipments I have today. There is no guarantee that a principle I am very fond of today will not be modified tomorrow, because there will be better technique available. So if I can go by the word of Karl Popper, who was one of the science philosophers, he said science advances by error elimination. It's not that science lies to you. Science refines itself as time goes. So many things we have studied 10 years ago need to be refined based on what we know today. So keep that in mind. Now the elephant has come back with the periodic table on it. Remember, yesterday I played the periodic table song, but the audio was not particularly exciting because this thing was, the battery was losing power. So I'll play the same song, but I don't like to repeat things. So today you will hear the song, as they say, from the horse's mouth. Yesterday I showed only an animation, but today I will show you Tom Lehrer, the Harvard University mathematician of 1950s, singing this song in a, I would say, concert in Copenhagen in 1967. Okay? And with that I will stop. Now, here's a song I always get requests for, but I can't understand for the life of me why. It's simply the names of the chemical elements set to a Gilbert and Sullivan tune. I think the only reason I do it is to see if I still can. We'll try. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, actinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. I left out one, actually.
A new one was discovered since the song was written. It's called Lawrencium. So those of you who are taking notes can write it down in your programs. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium and dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's gold and californium and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Thank you, Professor Das, for the invitation, and thank you all. I'll be happy to answer questions if there are any. If you have any questions, but you are hesitant to ask, you can also email any of us. You can search for our names from the program. You can search, do the Google search, or you can ask Professor Das, who will provide the names or the email addresses. If you have any questions about science, about chemistry, about curriculum, about how your career, how you think you should plan for your career in chemistry in particular, we will be more than happy to share with you whatever little we know. Okay, thank you again. Thank you, sir, for this informative and wonderful presentation of yours. I request you all to join us for high tea to be served outside the Sabhagar. I also request you all to take your seats back in 20 minutes for the next lecture.
Now it's time for Professor Parvati Biswas' lecture on polymer physics, concepts and applications. Okay. Thank you for Professor Das for inviting me here. So today what I'm going to say that all of you know what are polymers, and most of you know polymers from a synthetic point of view, that like polymer is basically a chemist's playground. But what I am going to say is that it is polymers have lot of physics also. The concepts, like lot of physics concepts can be also applied to polymers.
and that improves our general understanding of the polymers. So these are polymers in daily life. So you have seen lot of polymers which ranges from packets, buckets, tires, then your trash bags, everything is polymer in your daily life, bottles. So, so what are these polymers? So poly means many and mer means a unit. So polymer is basically a macromolecule. So yesterday, as we have seen, that protein is a macromolecule made up of amino acids. So here amino acids were the monomers. So in any non-biological polymer, it is basically a long chain molecule which is composed of many identical repeat units, which are called, all these repeat units is the monomer. So as you see here, this is ethylene, which is shown here. So ethylene is shown here, and you see that it polymerizes to polyethylene when these ethylene groups join together. So how do you synthesize polymers? So this is the most common things which is taught about polymers, is that how to make polymers. So basically polymer chemistry is what is taught in the curriculum, that how to synthesize polymers. So this is the most common polymer, which is composed of tetramethylene dicarboxylic acid, that is hexamethylene diamine and adipic acid adds together to form nylon, and this is basically a condensation polymerization. How does it take place? So this is your adipic acid, and then this is hexamethylene diamine. So 1 unit of water goes, so it joins here. So this is basically a condensation polymerization with the elimination of water. So this is how the units join together to form polymer. So this is the structure of your nylon. So all of you must know this, like you have known that how to synthesize different polymers. But polymers have diverse molecular structures, so, and which can be of many different shapes. So usually polymers, most commonly studied polymers are linear polymers, so which resembles, like the cartoon picture is like a chain. You have branched polymers, you have cross-linked polymers, and you have networks. So where many chains crisscross each other. So, and it can be of many different shapes, like some polymers, they look like a star. So what does it mean by a star polymer? Star polymer means the shape of the polymer is like a star. So you have a central core unit, and from the core unit you will have different linear branches. So similarly, you can see here that the second one is a combed polymer. My pointer is not working. So combed polymer, where you have a backbone chain and many of the linear branches are grafted on it, so the shape is like a comb. So second, you have the ladder polymer, so where these polymers have 2 backbones and you have linear chains which are joining these backbones, which resembles a ladder polymer, and also you have a broken ladder polymer, which is a semi-ladder polymer. So there are more shapes of these molecules which are given by rhotoxanes, then polyacetinane. Then you have this tree-like structure polymer which are called dendrimers. So dendron means tree and mer again means a repeating unit. So you have, this is dendrimer is a symmetrically structured tree-like polymer, and hyperbranched on the other hand, this is asymmetric. Means some of the branches of the tree is missing. So this is the main difference between dendrimer, which is symmetric, and hyperbranched, which is asymmetric. So the most common property of polymer which is studied is its size. So how can you define the size of a polymer? So usually a polymer sample comprises of many polymer chains.
So here you have to take what is basically called the ensemble average. That means I measure the end-to-end distance of each of these samples. So how do I do it? So basically this is the end-to-end distance, means the distance from one end of the chain to the other end. So here this is a zigzag. So this is a random walk conformation of a polymer. So this is a random walk conformation of a polymer. So where you can find the distance from one end of the chain to the other end. So here polymer chain, usually a flexible polymer chain. So here the assumption is also tacit that they should not interact. If they interact, they cannot cross each other. So this is a simplified view. So where the segments are not interacting with each other. So this can be viewed as a random walk. I'll show just now in a minute what I mean by a random walk. So there are n repeat units. As I told, that polymer is made up of many monomers. So these monomers join together to form the polymer. So here these polymer chain can be viewed as it has n monomers or n repeat units, each with a size of step length of L. So then what you do is that you simply, the end-to-end vector is the sum of all these bond vectors, and since this is all these bond vectors, they are equal in magnitude and their directions can be random, so they basically cancel out, and the average R for ensemble of polymer chains, that means it's a system of polymer chains which has many chains of different lengths, so that becomes 0. So since the average end-to-end distance becomes 0, then you have to go for the higher, how you will specify the size of the polymer. So size of the polymer you can define by the mean square end-to-end distance. So now I can show you the So this is a random walk basically. So this resembles what you call a Brownian motion. So you have a particle which is, you can see the central yellow color, lemon yellow color particle, and the black color, this is the solvent particles. So they are bombarding with each other, and the particle is getting bombarded by the solvent molecules in all directions, and what it is executing is called a random walk. And this is exactly the motion of the pollen grains as was observed by the botanist Robert Brown. So it is named after him. It is called a Brownian motion, or Brownian motion basically resembles a random walk. So following, or if we assume that polymer follows this random walk statistics, then we can simply find out the mean square end-to-end distance of the polymer, which is given by just product of the dot product of these two bond vectors. So this is simply Li Lj cos theta ij, where theta ij is the angle between these two bond vectors. So if you simplify this, only the I term, when I equal to j term, will contribute, and the other term will go to 0 because the ensemble average of cos theta ij becomes 0. And in this way we get a very simplified expression of the mean square end-to-end distance of a polymer chain, which is simply NL square. So N is the number of monomers or the step length, and L is the length of each segment of the monomer. So this basically this is the size of a flexible polymer chain which executes a random walk behavior. So there are other measures of size, of course, other than the end-to-end distance. So so what is the size of an isolated? So this is basically the size of a polymer chain which is in a solvent, but the solvent, it is a very dilute
medium. So basically the size, it is given by the isolated polymer chain. So in a dilute solution, you can assume that there should be a single chain. So this is the size of a polymer, which is R square is equal to NL square. So if you take the root mean square, it will be N half into L. So R square half, it is the root mean square end to end distance. So here, if your N is increased by N times, so the actual size will, if N is increased by 9 times, actual size will be of the polymer molecule increases by root over 9, that is only by 3 times. So typical value of this step length, or basically this is called the Kuhn's length. So this is an effective step size of the polymer. So this is taken, this is usually 0.6 nanometer. So the dimension of a large polymer chain with 10 to the power 4 monomers would be typically 60 nanometer. And the contour length is just N into L. So the contour length will be much, much larger. Contour length means it signifies the length along the contour. So basically if you have this, so this is the length along these small, along the contour of the chain, which has many dips, and then again it crisscrosses itself, so it takes care of all these lengths. But the end-to-end distance is just from one end to the other end. So this is basic difference. So what is the distribution? So once you find the end-to-end distance, you are also interested in the distribution of the end-to-end distance. So the distribution is usually if N is very large, that is the number of monomers is very large. This, by the central limit theorem of statistics, this is given by a Gaussian distribution. So the probability distribution of the end-to-end distance follows it is generally a Gaussian distribution, and this approximation is valid when the end-to-end distance is much shorter than the maximum extension of the chain, that is given by N into L. So this is the picture, how it looks if you plot P of R versus end-to-end distance. So this you can typically get in any polymer physics book, or this is also given in the Flory book, that is Principles of Polymer Chemistry. So if I don't know how much polymer is taught here, but this is a part of our MSc curriculum also. So another measure of the size of the polymer is radius of gyration. So what do you mean by radius of gyration? People who have studied physics here, anyone who is studying chemistry with physics, chemistry, mathematics, they should know what is radius of gyration. Anyway, it is written here. So this is the distance from the center of mass to one end. So rather than the other measure of size, which is the distance between one end to the other end, so this is simply the distance from the center of mass to the other end. So for a hard solid sphere, the radius of gyration is given by 0.632 R. So what happens for a polymer? Polymer is much less dense than a solid sphere. So, but because it can assume, it's a flexible polymer, it can assume many, many different conformations. It looks like a random coil. So this also somehow resembles a spherical shape. So you can find out the distance between from the center of mass to one end of the polymer. So Rg is significantly less than the root mean square end-to-end distance. So this is given by L by 6 n raised to the power half. So this is basically scaled by a factor. This is less by a factor of 1/6 than the other measure of size, that is the end-to-end distance, root mean square end-to-end distance. So what is the effect of entropy? So entropy, all of you know, you have read thermodynamics. Most of you have read thermodynamics in undergraduate classes as well as in
class 12. So the entropy of any system, this is a very important equation which is known as the Boltzmann equation, and this relates the number of configurations or conformations of the system, which is capital omega, with the entropy. So more the number of conformations in the system, more is the entropy. And K is the Boltzmann constant. So simply entropy is given by K ln omega. So omega is the number of conformations. So the entropy of an ideal chain, what do you mean by an ideal chain? Ideal chain, basically a chain can crisscross each other. That means there is no interactions between the monomers in the chain. So the entropy of an ideal chain with n monomers and with n to n distance r is given by this quantity, minus 3 by 2k. R is the n to n distance, nl square, plus constant. So what happens if a molecule is stretched? If a molecule is stretched, its n to n distance will increase and entropy will decrease. Why entropy will decrease? No, and entropy decreases because its number of conformations will decrease. So here that's a simple, here it comes from this equation. So if you stretch a chain, this omega decreases because it becomes more and more stretched. I can show you in the next slide. But internal energy does not change with stretching. So this is the concept of an entropic spring. So what happens, you can see here, this is a coil state, so n to n distance again is r. So if you stretch a spring, the r gradually increases, which is maximum here when the chain is fully stretched. So what happens basically when in a stretched spring or stretched polymer, we'll have fewer configurations. So since your omega decreases, so K ln omega will also decrease, and you have decreasing entropy as you go by. So all of you are, you know that what is Helmholtz free energy. Helmholtz free energy is simply internal energy minus T. T is the temperature and S is the entropy. So you can find out what is your A as a function of R. So earlier we have seen how we have calculated S. So now you just plug in the value of S and you get the value of this Helmholtz free energy. And the restoring force is usually given by the derivative of this dF or dA dr basically. So this is the derivative with respect to the free energy, and free energy here is A of r. So simply you can take the first derivative, you get it is 3 kTr by nl square. So this entropic elasticity, it satisfies this Hooke's law. Hooke's law, all of you know. Force is equal to minus kx. X. So how you compare between a spring and a polymer? So you see here in a spring, this is quite rigid. So entropy change is basically negligible. You can't stretch a spring, metallic spring. But your change in internal energy is large, and this provides the restoring force. But polymer is more flexible. So here the entropy change is large, and this provides the restoring force F. So this is the comparison between a spring and a polymer. So usually polymers, as we see that they follow not a random walk. Of course they follow a random walk in some kinds of situation, but usually they follow a self-avoiding walk. What is a self-avoiding walk? That is, you are no two segments can occupy the same space. Okay, so why? Because each of you know that this is from school, it is taught that no two objects can sit in the same space because each of them has a finite size. So here we are assuming that these monomers, there is interaction between the monomers, and because of that this follows a self-avoiding walk. So
So excluded volume, I will come later. So usually what happens, the self-avoiding walk, the size of such polymers are much greater than that of the random walk, or whatever is the size of polymers which follow ideal behavior. So for such expanded conformations, the end-to-end distance varies as we have seen for an ideal polymer chain, it is r square half goes as n half into L. So here it goes n nu, so this exponent is not equal to half. For a random walk, this nu is exactly equal to half, but with this nu, the value of this exponent, it characterizes the behavior of polymer. This is a very important expression, and you can get, this is a universality behavior, because all kinds of self-avoiding walk will follow this relation where nu is not equal to half. The moment nu becomes equal to half, this becomes equal to a random walk. So what is the value of nu? So this exponent, it varies according to the solvent. Solvent is very important in polymers because it doesn't exist as only a polymer chain, so it exists in a medium. So excluded volume effects are nothing, but this is non-bonded interactions between the monomers, as I said. So if you say that this is a cartoon of a polymer chain, so I represent two monomers here. These are not bonded, but because of the contour or because of the conformation of the polymer chain, they come close to each other and they have a repulsive interaction. So what kind of interaction is this? This is basically a van der Waals type of interaction. So this is a repulsive interaction. It has a repulsive as well as an attractive part, but okay, we assume it that this is a repulsive interactions, and these monomers have to be quite close enough in space. If they are far apart in space, you will not, the repulsive interaction will be much less. So for an ideal polymer chain, this is again S ideal, K ln omega. So this is given by K ln C R cube by N. So this is a sort of density. And if you represent the volume of each monomer by B, so then we can say that S of a non-ideal polymer solution is the ideal part plus K ln 1 minus Bn by R cube. B is the volume of each monomer, N is the number of monomer. So this is basically the total volume, and R cube also gives you a volume because R has units of length. So you can simplify it, just if you can expand the log series, you can simplify and get some expression of the non-ideal entropy. So once you get the entropy, another important thermodynamic quantity is the free energy of a polymer. So free energy basically is the sum of two contributions. So one is the entropic term, this is the elastic term, this is the connectivity that the monomers are connected in a chain. Another is the interaction term. So this interaction term is this one, 3kr squared by 2nl squared. How does it look? So this is the red one symbolizes F total. The purple one represents the excluded volume, and the elastic term is given by this middle, what you say, red or purple one, this F elastic term. So at equilibrium what happens, this free energy dF total by dF by dr should be equal to 0. So if you do that, you can immediately, since this is the free energy is a function of R, you can immediately take the first derivative and you can find the derivative like this. So once you have that, you can rearrange this and you can find that this exponent, whatever I was talking about, this is the end-to-end distance of a polymer. So this becomes Ln raised to the power 3 by 5.
instead of half for a random walk or for an ideal polymer chain, this becomes 3 by 5, which is close to 0.6. So it shows that the free energy of chains with excluded volume has a higher size than that of a random walk. And measurement of polymer size in solvents also support this result. So the beauty of the result is that if you have a polymer with excluded volume, means you have a solvent, particularly these are due to the polymer solvent interactions, the size changes. So if it has to be a solvent where the polymer expands, your exponent, whatever is the polymer, whatever is the solvent, you will always get this relation. So how does this self-avoiding walks look basically? So these are some pictures, computer generated pictures. So you can see that these are the random walks where the segments crisscross each other because they do not interact. So this represents, the random walks basically represents ideal polymer chains. But self-avoiding walks from the picture itself, you can find out they are much more expanded. So what happens when a polymer is dissolved in a solvent? So there are many kinds of interactions. Monomer-monomer, polymer-solvent, and solvent-solvent. So usually if we take, this is the solvent, and now if you insert the polymer, blue beads, so you have different kinds of interactions. One is solvent-solvent, one is polymer-solvent, another is polymer-polymer. So if the solvent happens to be water, then you have a solvent-mediated interactions between monomers in a polymer chain. So what happens? The solvent flow field actually disturbs the monomer which is adjacent to another monomer in a polymer chain. So this solvent mediated interaction is called hydrodynamic interaction, and it plays a very, very important role in polymer processing. So there are different kinds of solvent, as I wanted to say, that you have seen the self-avoiding walk, you have seen the random walk. So different solvents, according to the interaction between a polymer and a solvent, you get different kinds of behavior. So this parameter chi denotes the extent of these polymer-solvent interactions. So when chi equal to half, basically these two effects cancel, excluded volume and the elastic part or the entropic part is, the polymer size is only determined by the entropic effects, and it adopts an ideal conformation. So there is no excluded volume when chi equal to half. So such a solvent is called basically a theta solvent, and polymer is represented by a random coil. So when chi is less than half, then you have the excluded volume effects contributing to the size of the polymer, and due to excluded volume effect, the molecule expands in size or swells due to the interaction of solvent molecules, and size increases, and such a solvent is called a good solvent. And when chi is greater than half, then the polymer interactions actually dominate, and here you have a bad solvent. So in bad solvent and good solvent, you note that these exponents change, and these exponents are universal. Whatever be the polymer, whatever be the solvent, if it is a good solvent, it will always give you 3 by 5. It is a bad solvent, it will always give you 1/3. And what are the different applications of it? Applications are, say, nanovalves. So you have here you have, suppose, a polymer in a bad solvent. So you have 2 valves. So if you change the solvent here, suppose this is a bad solvent, then the polymer collapses. You can find that the valve is open. It's a sort of channel, so it can be used for any kind of delivery.
So you will see the polymer on both sides, these are collapsed. But if you now change this to a good solvent, then the polymer expands and the channel is closed. So same thing, it happens for switching of colloidal stability. When it is bad solvent, then it is not, it's a destabilized system, and if it is a good solvent, then this whole system is sterically stabilized. So basically I think, okay. So another thing very important is the polymer viscosity. So if you have any fluid, you know, all of you know viscosity, you have studied in fluids. So if you have a layer of fluid between two infinitely long plates, and if you move the upper plate, if there is a force exerted, so if you move the upper plate with a velocity v, you know that these layers, the internal layers of the fluid, they resist the flow. So that gives this solution viscosity, and this is directly proportional to the area of the plates and directly proportional to the velocity of the plate, but inversely proportional to the separation between the two plates. So you will get this viscosity expression, which is eta. This is the coefficient of viscosity. And this also, since polymers are complex fluids, so what do you mean by complex fluids? They have characteristics of a fluid as well as they have the characteristics of a solid. So that's why they are called complex fluids. So how do you measure viscosity? Very simple, Oswald viscometer. I am not sure because we do these experiments in MSc. So you can measure the time of flow of a fluid in a viscometer and with a stopwatch or with any other watches, and from here you can determine different kinds of viscosity. One is the relative viscosity, which is given by the ratio of 2 times the specific viscosity, and the intrinsic viscosity. So this is basically the intrinsic viscosity in the limit of concentration tending to 0. So this is a very important quantity which we determine actually in research. And what is the viscoelasticity? As I told, that the polymers have the viscoelastic behavior. So it behaves as an elastic solid as well as a viscous liquid. So you can find the shear stress. Shear stress is nothing but the force per unit area, and strain is nothing but it is just some unit of, suppose it undergoes its strain, that means it is delta L by the L. So this is basically dimensionless, and from this you can measure the modulus. Modulus is nothing but stress by strain. So as it is shown here, so the next slide will, so this stress is basically, though it's force per unit area, it is expressed in terms of a tensor. Tensor is nothing, you have done vectors, scalars, so that it is a generalized vector. So each of these components are represented in x, y and z directions. So your I is a direction which is normal to the surface, and j is a direction which is parallel to the stress. So you have 9 components of the stress. And strain is any sort of deformation. So if you have length, so this is delta L by L. So this is basically dimensionless. And here it shows that how your stress relaxes for a constant strain. So if you have an input like this, your strain is constant with time, your stress relaxes in this way. So this is a decaying function, and the relaxation modulus is basically nothing but stress by strain. So these things are all taken, these are textbook materials. So if you are interested, you can see the book by Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers. And basically we study the rheology and the conformational properties of polymers in my lab. So what we study are these kind of tree-like polymers, which are called dendrimers.
So they originate, these are branches upon branches. It exactly looks, if you cut a cross section, each of them looks like a tree. So from a central core you will have branches, and then you have another branch attached to it, and in a tree-like manner it grows in a geometric progression. So these have very unique conformational and dynamic properties. I am not going to go to the details. And the applications are, these can act as nano containers for anti-cancers, drugs and dyes. They can act as catalysts, and they can also act as this. They have wide applications. They can be used as contrast enhancing agents for MRI. And we also study, so how theoretically we study, we have these kinds of models. So where you have a central core molecule, and these are joined by spacers. So this gives the generation 1 dendrimer, which is basically a star polymer. And these are branches upon branches, as you can see the tree structure. And then we try to model this mathematically. And we also study these kind of molecules which look like rings. So why we study ring polymers? Because in nature there are a lot of cyclic DNA, lipids, polysaccharides, and even cyclic polypeptides. So if you study ring polymers, some of the properties you can, the generic properties of these kind of molecules can be inferred from the topological similarity. So this is what I have to say today. So I can thank you for all your attention. I'm not going to go to the details of all these things. वैसे तो मैं बिना इसके भी चिल्ला सकता हूँ। ये भी एक फायदे की बात होती है। से आज तक जो बिना स्वेच्छा से जो बैठ पाए हैं सब लेक्चर पे, इसका मतलब वो ज्ञान ग्रहण करने को तैयार है। और जिनको 10% समझ आ गया इसमें से, तो वो काफ़ी गुड स्टूडेंट हैं। और जो मोबाइल फ़ोन का अच्छा सा यूज़ करके इसे 20% बना सकते हैं, वो वेरी गुड स्टूडेंट है। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि 100% नहीं मिला तो हम घाटे में हैं या क्या हम बुरे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और आपको देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जो मटेरियल साइंस, ये सब जो आप अपनी क्लास में उसके बेसिक्स पढ़ते हैं, उसी को थोड़ी और ऊंचाइयों पे हम ले गए हैं। और बताया है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके आजकल का जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर 10% भी आपके आ गया तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके।
तो एक चीज केमिस्ट्री में करते हैं, हमने देखा फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड्स हैं, मटेरियल है, मतलब कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स एंड वेरियस आयन, एंड देन एक इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी केमिस्ट्री में, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। अगर दे रहे हैं वो इसको रिड्यूस हो जाती है स्पीशीज, ले लेते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सोल्यूशन के अंदर कर सकते हैं, लाइट डाल के कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड सरफेस पे कर सकते हैं। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैं वो इलेक्ट्रॉन लेना देना इलेक्ट्रोड सरफेस पे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अब इलेक्ट्रोड सरफेस पे आपने फैराडे लॉज तो पढ़े हैं, याद है किसी को? फैराडे लॉज, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कोई बता सकता है? कोई है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का? दोनों नहीं पढ़े होंगे, स्कूल में ही पढ़े हैं, वो तो सभी ने पढ़े हैं। अच्छा, नहीं उन्हें पता है पर बोलने में शर्मा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी आ गए तब भी ठीक है, मैं दिमाग भी पढ़ लेता हूं काफी दूर से। So don't worry. So इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरफेस पे क्या होता है? अब सिंपल स्टोरी, बिल्कुल फिल्म की स्टोरी जैसे बताएंगे। जब हम इलेक्ट्रोड को डालते हैं किसी मेटल वायर को सॉल्यूशन में, कोई उस पर पोटेंशियल नहीं लगाया, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं है, तो खुद जो उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मैक्सिमम है बीकर में, तो वो जाके उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं मोनोलेयर, वो डाइपोल्स हैं। सो कुछ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है मेटल, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे, वेरी क्लोज टू इट, तो एक मोनोलेयर बन जाता है। फिर जब उसी इलेक्ट्रोड को हम दूसरा इलेक्ट्रोड डाल के उस पर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, तो जो आयंस है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है, वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। क्यों खींचने लगते हैं? कूलम्स लॉ पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ा है, तो उसकी वजह से आ जाते हैं। और सारे आयन आके क्यों नहीं चिपक जाते उस पर? वो इसलिए कि एक टेम्परेचर चीज है हमारे, जब भी कोई भी हम फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, रूम टेम्परेचर, फाइनाइट टेम्परेचर, 100 डिग्री पे ले जाएंगे, कभी सब जीरो ले जाएंगे, टेम्परेचर से खेलते हैं। तो टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है? एक डिसऑर्डरिंग। अभी मैडम भी बता रही थी कि कैसे पॉलीमर डांस करता है, देखा भी है उसका सिमुलेशन। तो टेम्परेचर का काम यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शांत नहीं बैठते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप तो बड़े हैं तो शांत से बैठे हैं, हिलते रहेंगे, उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। तो उसी रैंडमनेस की वजह से जो किकिंग हो रही है वो उसको अपोज करती है किसी भी ऑर्डर को सोल्यूशन के अंदर। तो जब आयंस उसके पास आ रहे हैं तो ये जो डिसऑर्डरिंग फोर्स है, थर्मल फोर्स की, इसकी अगर एनर्जी हम नापना चाहें तो हम कहेंगे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सुना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? वेरी गुड, यस बोलोगे तो और भी अच्छा लगता है टीचर को। हाँ, नहीं भी सुना तो भी एक आध बोल दिया करो बीच में। हाँ, टीचर को एटलीस्ट लगेगा बात जा रही है मेरी ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो है एवरेज थर्मल एनर्जी जो है सोल्यूशन की वो बता देता है, KBT कहते हैं। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं उसका क्या डायमेंशन है ये भी पूछ सकता हूं, पर अपने मन में रखो इसका आंसर, ओके। और उस बट KBT मिला के दोनों एनर्जी का यूनिट बन जाते हैं। उसको हम, क्योंकि जैसे हमने किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी मेजर कर सकते हैं, जूल में भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, यूनिट्स हैं अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा लगता है यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो 1-2 वोल्ट में काम चला लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ गुड यूनिट। इवन सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चल रहा है, उस सारे लेक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो आसान रहता है कैलकुलेशन। तो ये कितना होता है, जैसे रूम टेम्परेचर है उस पर अबाउट होता है, इसको 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओके, तो कोई भी जब एनर्जी उससे कम होगा इंटरेक्शन की एनर्जी, तो ये थर्मल एनर्जी प्रिवेल कर जाएगी, डिसऑर्डर कर देगी। जब उससे ज़्यादा हो जाएगी कूलम्बिक फोर्स, तो वो प्रिवेल कर जाएगी। अब कौन रस्सा कस्सी चल रही है दो फोर्सेस में, एक ऑर्डरिंग एक डिसऑर्डरिंग, देवता दानव लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है और देवताओं में कितनी एनर्जी है। तो कूलम्बिक आर लाइक योर देवता एंड दोज आर दानव। तो
तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है सॉल्यूशन के अंदर। फिर जब पोटेंशियल ये आए, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस आ जाएगी ऊपर इलेक्ट्रोड जब पोटेंशियल लगाएंगे। पर वो पोटेंशियल, ये जो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्टेज को वापस इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो 25 मिली वोल्ट से जब बहुत ज़्यादा होगा वो वोल्टेज, तब वो उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। और जब हम उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसा नहीं होगी जो पोटेंशियल लगाया ख़त्म हो गया वहीं पे, वो सोल्यूशन में जा रहा है, वहाँ पे एकदम कांस्टेंट फाइट चल रही है ये एट्रैक्टिव फोर्सेस की एंड डिसऑर्डरिंग फोर्सेस की। तो एक डिफ्यूज लेयर सी बन जाती है, मतलब आयन एक जगह बैठ नहीं पाते हैं पर उनकी इच्छा है कि हम बैठें, तो वो एक रीजन में ही रहते हैं नियर बाय। तो ये पूरी की पूरी जो लेयर है ये नैनोमीटर साइज के डायमेंशन में होती है अक्सर, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड करो तो भी बड़ी हो जाती है, बहुत डाइल्यूट करो तो भी बड़ी हो जाती है। बीच में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आयन का जो कंसंट्रेशन इतनी है कि वो आयन साइज में पास आ गए हैं, लगभग उनके डायमीटर के बराबर, वहाँ पे मिनिमम होगी। ओके, तो वो चलता रहता है इसमें युद्ध, एंड इस तरह से डबल लेयर बन जाती है। सो एनीथिंग विच वांट टू गो टू द इलेक्ट्रोड हैज़ टू पास थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, जहाँ पे एक डिफ्यूज लेयर है जिसमें कि नाच रहे हैं। मतलब अगर जैसे फेवरेबल है तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, दूसरे केस में पोटेंशियल दूसरा लगा दिया तो नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे उस रीजन में 1 नैनोमीटर के, और पीछे फिर वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल सोल्यूशन बल्ब। सो ये स्टोरी है इलेक्ट्रोड की। इसी में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने भी जाएंगे, जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से जाना पड़ेगा। तो अगर वहाँ नेगेटिव आयन ज़्यादा थे और इलेक्ट्रोएक्टिव पे भी नेगेटिव है तो उसे रिपेल करेगा, मत जाओ उधर, ठीक है। और वो इसलिए भी रिपेल करेगा जब हम किसी चीज़ को सरफेस पे ला रहे हैं। सरफेस इज 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। तो अगर अभी अभी सुना नंबर ऑफ कन्फिग्रेशन, सरफेस पे कन्फिग्रेशन रिड्यूस होंगे क्योंकि उसके कॉन्स्टेंट लगेंगे। ओके, लाइक इफ यू कैन फ्लाई लाइक बर्ड, पूरे हॉल में आप लोग घूम रहे होते, इफ यू आर सिटिंग ऑन दिस इट इज कांस्टेंट, ये कम एंट्रोपी है, उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो जब हायर एंट्रोपी से कोई लोअर पे जाएगा और एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगी उसे, एंट्रोपिक फोर्स, तो कोई भी चीज सरफेस में वैसे ही जाना पसंद नहीं करती। ओके, घर में रहना किसी को क्या पसंद, ठीक है। सो दे वांट टू गो टू फ्री, तो वो भी एक रिपल्सिव फोर्स रहती है इलेक्ट्रोड में, दे डोंट लाइक। दूसरा है कि बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हैं, वो भी हैं। तो ये दोनों मिलकर एक बैरियर सा क्रिएट करती है आयंस के लिए। तो कोई भी चीज जा रही है पहले पसंद नहीं करती। अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अ रिपल्सिव इंटरेक्शन आइदर ड्यू टू एंट्रोपिक रीजन और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स फेवर कर रही है स्क्रीन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें एक एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर होता है फिर कूलम्स वाला। तो उसको स्क्रीन की वजह से वो वीक फोर्सेस हो जाती है कंपेयर टू प्योर कूलम वीक फोर्स। तो उस स्क्रीनिंग की वजह से क्या है, जितना एनर्जी का फायदा या नुकसान हो रहा है, अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अंदर घुसना चाहिए क्योंकि उसको तो फेवरेबल मिल रहा है। बट तब भी बिकॉज ऑफ एंट्रोपिक लॉस ऑफ द सरफेस स्टिल ओवरऑल रिपेल ही करता है। तो कोई भी चीज अगर जा रही है सोल्यूशन में फास्ट डिफ्यूज कर रही है, जैसे ही इंटरफेस में घुसने लगेगी स्लो हो जाएगी, 1000 टाइम्स स्लो, 10,000 टाइम्स स्लो, इतना इतना अंतर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपिक रीजन एक्शन। तो आगे चलते हैं, स्लाइड तो बदली नहीं, ऐसा कुछ दिखती है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। मैं बेसिकली थियोरेटिशियन हूं पर थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करता हूं, तो आपको भी दिखा रहा हूं। ये जो है ये टिपिकल, ये ऑटो लैब बहुत सारी कंपनी बनाती है, मेक इन इंडिया भी बन रहे हैं आजकल। और ये जो है पीछे ये चिलर है। जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट। तो टेम्परेचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अलग अलग टेम्परेचर पे करके भी हम उसकी अंदर की बातें जानना चाहते हैं। तो वो है चिलर उधर। तो ये है मेरी सेल, ये ग्लास ब्लोअर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उससे बनवाई, सस्ती बनती है, जितनी मर्जी तोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अमेरिकन लोग हैं तो $400 मांग लेगा, $100 मांग लेगा। ये इलेक्ट्रोड भी खुद ही बनवाते हैं ऐसे। 3 तरह के इलेक्ट्रोड हैं। एक को बोलते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड, जो काम करता होगा उसी को वर्किंग बोलते होंगे, जिस पर रिएक्शन कर रहे हैं सारे। एक को बोलते हैं काउंटर इलेक्ट्रोड, उसका काम है जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल, उनको सर्किट से बैलेंस करना। तो वो उसका एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरी एक पत्ती लगी हुई है स्क्वायर बिग, इसका एरिया बहुत छोटा पतला सा वायर, 10 टाइम और 100 टाइम तक लेते हैं अंतर। पर्पस ये है कि सारी हाई करंट डेंसिटी इस पे रहे, लो करंट डेंसिटी इस पे रहे, सो द रिएक्शन ऑल हैपन एट दिस प्लेस, नॉट ऑन दिस। तीसरा इलेक्ट्रोड रेफरेंस, इसका क्या काम है? जब दोनों काम करने वाले तो उधर है, तो एक काम करेगा, दूसरा सर्किट के लिए काम करेगा। तीसरे का काम ये होता है कि अब जब हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी बन जाता है। तो जब भी हम कोई जैसे पोटेंशियल स्कैन वाले काम करते हैं, वी आर चेंजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक टेक्निकल साइक्लिक वोल्टामीट्री यूज करता है कोई एमएससी में? करनी चाहिए, खरीद लो, सस्ता मिल जाता है, 2-2.5 लाख का भी मार्केट में अवेलेबल है, एमएससी में कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी, सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट, सारे मटेरियल साइंटिस्ट जो भी इस तरह की चीज करते हैं वो सीवी जरूर रिकॉर्ड करते हैं। सीवी में हम क्या क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस पोटेंशियल पे हो रहा है, ओके। और दूसरा है कि टाइम डोमेन में करते हैं। टाइम डोमेन में क्या है, 2 चीजें है ना, कि कोई चीज टाइम में भी बदल सकती है। अभी कोई स्लो है तो उसको अगर मैं 1 घंटा दूं तो पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे, कोई फास्ट है तो माइक्रो सेकेंड, इधर हमने इवन फेम्टो सेकेंड भी सुना है कि कुछ इवेंट को देखने के लिए हमें और छोटे टाइम पे जाना पड़ता है। पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्चुनेटली इतने छोटे टाइम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो डबल लेयर है वो माइक्रो सेकेंड के टाइम स्केल में ही मूव करती है उसकी। तो उसके फास्ट कुछ भी करोगे, सॉल्वेंट दिखेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिखेगी नहीं, तो फिर क्यों देखोगे उसको, ओके। जिन लोगों को सॉल्वेंट में इंटरेस्ट है वो चले जाते हैं गीगाहर्ट्ज पे, बट जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो मेगाहर्ट्ज और उससे लोअर फ्रीक्वेंसी पे, मिलीहर्ट्ज मिल जाएगा, इवन माइक्रोहर्ट्ज भी मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट में। ये इंस्ट्रूमेंट है, सो इसमें ये है। और टिपिकल इलेक्ट्रोड जो है, इसकी सरफेस अगर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें, इसको हिंदी पसंद है, देखो रफ इलेक्ट्रोड, रुक्ष विद्युत ग्रह, ये CSR में बोलते हैं हिंदी दिवस पे एक लेक्चर दो हिंदी में, तो मैंने बहुत मेहनत करके सारे वर्ड ढूंढे थे उनके लिए फिर उन्होंने बोला नहीं पूरी हिंदी मत बोल देना, हमें भी नहीं समझ आएगा। मैंने कहा अच्छा है, दैट मुझे भी नहीं बोली जाएगी पूरी हिंदी तो ओके। सो आई एम डूइंग, आज थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ। किसी को सारे हिंदी समझते हैं स्टूडेंट? इसका तो आंसर पता है भाई, ठीक है ना? कोई ऐसा तो नहीं तमिलनाडु से आया कि हिंदी नहीं आती, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज टिपिकल क्लीनिंग प्रोसेस एटसेट्रा। कई बार ये सिंगल मटेरियल भी होता है, मल्टी मटेरियल, because you are targeting to make certain reaction to happen. So these electrode can be very pure metal like platinum, gold or glassy carbon, or they can be very composite material also. जहाँ पे लाइट डाल लिया तो सेमीकंडक्टर बना देते, लाइट को पकड़ेगा भी तो तभी तो चलेगा आगे, ठीक है, ओके। सो कल भी ये वाला स्लाइड दिखाई थी, तो हमने ये बताया कि क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रोड पे, ये जानना भी जरूरी है। जब इलेक्ट्रोड पे सबको ये तो पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फैराडे लॉ नहीं बताया था, गोल्ड डिपॉजिट करते थे, काफी लोगों ने फैराडे लॉ सीखा और खूब सारे पैसे बना लिए, सिल्वर ज्वेलरी को गोल्ड ज्वेलरी बना दो, मतलब फेक ज्वेलरी, सबको गोल्ड महंगा होता है, सब खरीद नहीं सकते, तो यू हैव बिगर मार्केट। देन दूसरा है ये जो चार्ज अभी हमने बताया, एक्यूमुलेशन, आयंस, डाइपोल एटसेट्रा, वो इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहलाता है उसकी, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोई आयन स्पीशीज, ऑर्गेनिक, inorganic ion, they can come and absorb at the surface. Adsorption, as you know, there are 2 types of adsorption, chemi-adsorb, physi-adsorb. Then they can, because they have to transport from bulk to the surface, so there is a process called diffusion. And when there is electric field there will be migration also. So both combination of diffusion, migration is there. If you start stirring your solution, there will be convection, or you can go up to turbulence level, but
And then there is, because you have electrolyte, finite resistance होता है ना, सबकी एक resistivity होती है, कितने मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, KCl है, उसकी क्या तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी देता है वो। तो जब हम इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी बढ़ा देंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उनकी इंफॉर्मेशन सप्रेस हो जाती है, क्योंकि और ओम्स लॉ की तरह ही काम करता रहता है पूरी सेल। सो दैट वन हैज टू रिड्यूस यूजुअली। तो इसीलिए काफ़ी जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी मीडियम की बढ़ा के रखते हैं, नहीं होती तो कोशिश करते हैं बढ़ाने की, या इलेक्ट्रोड को पास लाने की कोशिश करते हैं कि ये कंडक्टिविटी, ये ओमिक पार्ट वीक है। और यू कैन सिंथेसाइज, यू कैन डू लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल आल्सो। एक तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रिएट किया इलेक्ट्रोड पे, बल्क में जाके किसी और को उसने छीन लिया इलेक्ट्रोड, वो ऑक्सीडाइज हो गया, कुछ नया कंपाउंड बन गया। तो काफ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करते हैं, वो बल्क रिएक्शन कपलिंग हो जाती है। एंड जो ये सरफेस है इलेक्ट्रोड, usually whenever you are dealing with a solid electrode, these are very disordered, intentionally made sometimes they are naturally disordered. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने की। तो जो आज हम करना चाह रहे हैं, टाइम कितना है? बहुत है। ओके, फैराडे लॉ, जिसने नहीं जवाब मन में दे पाया था अभी देख ले, कल एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ने क्या यही बोला था, ये जो अमाउंट ऑफ मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू कितना मैंने चार्ज दिया था। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो एक वर्जन ये भी कर सकते हैं कितनी देर करंट, बट दीज आर लाइक मोर स्टडी स्टेट लॉन्ग टर्म मेजर। दूसरा था कि आपस में हम उनके लाइक एटॉमिक वेट्स एक्सेट्रा भी निकाल सकते हैं, वैलेंसी ये सब। दूसरा लॉ उसमें हेल्प करता है। सो दीज टू आर इम्पोर्टेंट लॉज which are used extensively, taught in schools, so everybody will be knowing। जिसने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है। और दूसरा है इसके अंदर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये भी बहुत यूज होता है, पढ़ा होगा आपने। इससे हम फ्री एनर्जी कैलकुलेशन कर देते हैं। ये भी बता सकते हैं कौन सा जो इसमें बहुत सारे केमिकल हैं, एक ऑक्सीडाइज स्टेट है, एक उनकी रिड्यूस स्टेट है। हमें कोई सेल बनानी है तो किसको किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड E0 जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर होता है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज। इसको में कोई इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये डिपेंड करता है। लूमो हुमो ऑर्बिटल सुना हुआ है? सुना है ये वर्ड? लोएस्ट टीचर्स ने सुना है, स्टूडेंट्स ने सुना है? सुना है? टोपी वाले ग्लोबी, कौन से सब्जेक्ट से हो? इंजीनियर, बायोलॉजी, बट इंजीनियर्स को भी थोड़ी तो साइंस आती होगी। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, तो यही होता है। तो बेसिकली ये जो है E0 प्राइम, इट हैज ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट दोस टू थिंग, नथिंग मोर। इतना अगर पता है सब। ये फ्रंटियर ऑर्बिटल भी कहलाते हैं। जब भी कोई काइनेटिक्स होती है, फ्रंटियर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले आराम से बैठे रहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सारे रिएक्शन हम इसके रिस्पेक्ट में जब भी काइनेटिक्स भी करेंगे E0 जरूर होगा उसमें। E0 का E0 प्राइम बना लेते हैं, वो उसमें एक्टिविटी ये सब उसमें ही भरी कर देते हैं, क्योंकि हमें अक्सर हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बनाते हैं और हम कहते हैं एक्चुअल में तो एक्टिविटी जाती है इक्वेशन, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी भरी कर लेते हैं। 1:30 बजे तक है ना मेरा टाइम, तो ओके रुक जाएंगे जहां टाइम हो जाएगा। किसी का लंच नहीं मिस होने देंगे आज। ओके, ये कल नॉस्ट इक्वेशन भी देखा था। आप लोगों को नॉस्ट इक्वेशन पता है किसको? अरे नॉस्ट ने भी इतना अच्छा काम किया, पता नहीं पता है आपको? मन में किसी को पता है? कोई किताब खोलेगा, कोई जल्दी से मोबाइल पे सर्च कर लेगा नॉस्ट इक्वेशन, तो ऐसी यहीं लिखी हुई है, देखने की जरूरत। तो नॉस्ट इक्वेशन जो सरफेस कंसंट्रेशन है ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्पीशीज की, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन के रेशो को, सरफेस कंसंट्रेशन को सरफेस पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। दूसरा काइनेटिक की इक्वेशन होती है टैफेल इक्वेशन। टैफेल बोलता है जो हम जैसे अब फैराडे लॉ कर रहे थे, कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो टैफेल करंट और पोटेंशियल ही होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वेरिएबल।
जो करंट है और उस पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ये एम्पिरिकल इक्वेशन है पहली टाइम, यू डू एक्सपेरिमेंट, टेक लॉगरिथमिक ऑफ करंट एंड प्लॉट, यू फाइंड इट आउट, इट्स एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आधे टाइम साइंस में हम लोग यही करते हैं, उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करो, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो, समझ आ गया, फिर कहते हैं अगर बना पाते हैं तो। नहीं बना पाते कहते हैं उससे डेविएशन है, आइडल लॉ से डेविएशन है, और ये सब साइंस का कोशिश हो तो फर्स्ट सिंपलेस्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज स्टैफेल इक्वेशन एंड देन अनदर इज रेट कांस्टेंट। अब पोटेंशियल पे क्या डिपेंडेंस है, और तो स्टैफेल में भी वो चीज आ गई है। इसी को अगर मैं लॉग ले लूं, जो पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और आगे एक प्रीफैक्टर के नॉट एंड अल्फा। तो जो के नॉट है ये स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट है, अल्फा इज ट्रांसफर कोएफिशिएंट। मैंने पोटेंशियल लगाया, वो जो रिएक्शन साइट है वहां तक कितना पोटेंशियल ट्रांसफर किया, ये उसका मेजर है। जितना मैं लगाता हूं उतना नहीं पहुंचता, कम पहुंचता है, क्योंकि बीच में मेटल है, डाइपोल्स हैं, आयंस हैं, अब वो कहाँ बैठ के इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो उतनी दूरी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसमें अकाउंट करना पड़ेगा। देखो E0 प्राइम आ गया इधर, स्टैंडर्ड E माइनस E0 प्राइम, विच इज की हमेशा ये अब ये डिसाइड करता है मैं इसके राइट पे जाऊंगा, एक तरफ जाऊंगा लूमो हो गया, दूसरी तरफ जाऊंगा लोम हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस साइंस चेंज करूंगा। कौन सा ऑर्बिटल एक्टिव करना है वो मैं पोटेंशियल से कंट्रोल कर रहा हूँ। एज टोल्ड यस्टरडे ना, सबको अच्छा लगता है रेगुलेटर घुमाओ और जैसा चाहिए, आजकल तो कर्सर को ऐसे उंगली से घुमा के भी आवाज तेज कम कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही करना चाहता है इंसान। सो दिस इज वन थिंग एंड देन यू हैव RT, ये जो है थर्मल एनर्जी हो गई, इसको KBT भी लिख सकते हैं, मोलर है या सिंगल मॉलिक्यूल बेस्ड है, तो उसके हिसाब से KBT और RT ये भी है इधर। ये इसको स्केल कर रही है, पोटेंशियल फैराडे कांस्टेंट, पोटेंशियल मिला के एनर्जी बनेगा, नीचे भी एनर्जी, एनर्जी बाय एनर्जी, सिर्फ नंबर बचा, अल्फा इज जस्ट नंबर प्योर नंबर। सो बेसिकली कभी भी कोई इक्वेशन नॉन लीनियर है, किसी एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, उसके अंदर हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ओके, ये ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में यही सब सिखाते हैं कि डायमेंशन चेक करते रहो, गलतियां कम होंगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आगे चलते हैं। देन सबने सुना है कि ये एक्टिवेशन बैरियर होता है। सारी काइनेटिक्स एक कंसेप्ट है कि जाने से दूसरी तरफ रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले उसे एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसे हम एक्टिवेशन बैरियर कहते हैं। तो वो जो एक्टिवेशन बैरियर है वो यही कंसेप्ट है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी y एक्सिस पे, x पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कहीं पे एंगल होगा, कहीं पे डिस्टेंस होगा, कुछ लोग तो उसको एनर्जी भी प्लॉट कर देते हैं, बहुत कुछ इसमें इस नाम से चलता है साइंस में। और जब हम ऐसे मानना चाहते हैं कि जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड था उसमें बहुत ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन, मना तो नहीं कर रहा कि वो सिर्फ देगा इलेक्ट्रॉन या लेगा नहीं, दोनों तरफ प्रोसेस चलते हैं, बिकॉज डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। सो इन दैट केस देयर इज अ बटलर-वोल्मर इक्वेशन, वो ये कहती है जो करंट आएगा, नेट करंट, वो कैसे आएगा, जो कैथोडिक करंट था माइनस एनोडिक करंट, अगर दोनों तरह के करंट चल रहे हैं तो जो उसमें से नेट आएगा वही बार दिखेगा हमें एक्सपेरिमेंट के। तो वो और n इज द कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मेरे इस प्रोसेस में, एक हुआ तो n1 हो गया। फैराडे कांस्टेंट इज लाइक करेंसी कन्वर्टर की मोल्स को चार्ज में कन्वर्ट करना है ना, उसकी डायमेंशन जानते हैं आप। और a इज द एरिया, बड़ा एरिया का इलेक्ट्रोड है ज्यादा रिएक्शन करेगा, छोटा है कम। K नॉट इज स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट क्या है, कोई भी चीज को हम किसी आइडल कंडीशन में जानना चाहते हैं कितना है, जिससे कि जब मैं और चीजें डालूं मैं उसको रिकवर कर दूं। तो दिस इज व्हाट, एंड दूसरा अल्फा। तो जब हम इसकी और और डेप्थ में जाते हैं तो हमको एक बेसिकली एक तरीका तो यह है कि मैं इस इक्वेशन को लूं, कोई भी रिएक्शन करूं, मुझे पोटेंशियल करंट पता है, उसमें फिट करके के नॉट और अल्फा निकाल दूं, एक ये तरीका है। बट उसके अंदर बहुत कुछ लंप हो जाएगा। अगर वही मैं रिएक्शन सॉल्वेंट बदल के कर दूं फिर के नॉट अल्फा बदल जाएगा, वही रिएक्शन में रिएक्टेंट बदल के कर दूं फिर उसका भी इम्पैक्ट हो सकता, मेटल बदल दूं उसका इम्पैक्ट होगा। तो इन सब चीजों, मेटल को रफ बना रहा हूं उसका इफेक्ट हो रहा है। हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन थ्रू दीज टू पैरामीटर। तो जो फिजिकल केमिस्ट है और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इंटरेस्टेड है
वो इन्हीं दो क्वांटिटी का मॉडल करते हैं। तो एक सक्सेसफुल मॉडल जो है वो मार्कस का है। तो इसको मार्कस को नोबेल प्राइज मिला था। जहां पे जो भी कुछ हम बता रहे हैं नोबेल प्राइज से नीचे कुछ नहीं बता रहे। तो 10% भी लोगे तो आपका भला उससे भी हो जाएगा। अगर उसी को आप एम्पलीफाई करने लगे तो जैसे अभी का स्टेमिना बन गया है कि नॉलेज को सुनने का, उसके बाद नॉलेज को खुद पढ़ने का, उसके बाद सोचने का बन गया, तो तुम नोबेल प्राइज के कैंडिडेट उस राह पे हो। पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है। सिविल सर्विसेज करोगे वहां मेहनत करोगे, हो सकता है कोई बॉस गाली भी दे तुम्हें। साइंस में कोई गाली नहीं देगा तुम्हें। अपना दिमाग, अपनी प्रोग्रेस, जो मजे, जो सोचो, कोई फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। केमिस्ट्री में बैठ के फिजिक्स कर लो, बायोलॉजी कर लो, कुछ भी कर लो, फ्रीडम होती है। वो उसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोलते। और अच्छा समझते हैं, जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं वो फिजिक्स में ट्रेनिंग करता है, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो लोग इधर से उधर कूद जाते हैं, अपना वो ज्ञान वहां लगाते हैं, वो जैसे बायोलॉजी वाला है, उसकी केमिस्ट्री फिजिक्स वीक होगी, उसमें घुसा दिया एक फिजिक्स वाला, मतलब वो मेहनत कर रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है, उनकी प्रॉब्लम अपने दिमाग से सॉल्व कर दी, उनके लिए वो नोबेल हो गई, उसको नोबेल मिलता है। तो ऐसे ही अक्सर जो मिलते हैं जिनको, उनको ऐसे ही मिलते हैं, वो क्रॉस डिसिप्लिन में ज्यादा जाते हैं, वो अड़े नहीं रहते। जैसे कई बार होता है ना डिपार्टमेंट में, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट, सबसे अच्छी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा कहेगा फिजिकल, चौथा कहेगा मैटेरियल। तो ये सब जब रिसर्च करते हैं कोई बाउंड्री नहीं होती। आपने देखा भी होगा जितने लेक्चर हुए सब इधर से उधर जा रहे हैं, फिजिक्स भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स भी चल रहा है, साथ में केमिस्ट्री भी चल रहा है, बायोलॉजी भी चल रहा है। आंखों में लाइट कैसे दिख रही है वो सब, मॉलिक्यूल बायोलॉजी सब चल रही है साथ। तो जब हम हायर नॉलेज में जाने लगते हैं तो कोई बाउंड्री नहीं रहती, हम वही जो अच्छा कर सकते हैं वो करते हैं। तो ओके, तो आप सबको भी जीवन में वही करना चाहिए जो आपके मन से लगता है कि ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, उसी में जुट जाओ। ज्यादा 10 जगह हाथ पैर मत मारो, एक जगह एनर्जी लगाओ, 10 साल लगाते रहो, रास्ता दिखने लगेगा, सक्सेस मिलने लगेगी। पर वो एक डिकेड तक कमिटमेंट तो मिनिमम चाहिए। फिर जब एक डिकेड लगा लोगे उसके बाद और कुछ करने लायक भी नहीं बचोगे। You keep thinking that way always. Like most of us can't think of doing anything else. जो हमें करना पसंद आता है वही करते रह सकते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं। तो जैसे आप किसी को लगता है इस एज में कि वो गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये वाला गाना वाला, कुछ रैंडम गाने भी होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, कुछ इस पे हाथ पैर हिलाने लगते हैं लोग। पर ऐसी साइंटिस्ट को भी मजा आने लगता है जो वो कर रहा है। तो मजा हर फील्ड में आता है अगर उसमें आप मेंटली इन्वॉल्व होते, उसे समझने लगते हैं। किसी को स्पोर्ट्स में ऊंचा कूदने में मजा आता है, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस। सी, सो दिस मार्कस ने क्या किया, उसने बोला कि ये जो दो, पहले तो होमोजीनियस किया, दो स्पीशीज हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कोबाल्ट, हेक्सामीन 2 एंड हेक्सामीन 3, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है, इसकी जो काइनेटिक्स है मेनली कंट्रोल्ड बाय सॉल्वेशन अराउंड इट। कि जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है सॉल्वेंट में कि उनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। यही है जो एनर्जी बैरियर है जो पीछे दिखाया, वो बैरियर उन्होंने बोला इससे कंट्रोल हो। तो इसको लेके उन्होंने बहुत कुछ होमोजीनियस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉट होमोजीनियस होमोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया, इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। पर जब हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। इसको लगाया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्जन, हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वर्जन भी थ्योरी है, क्योंकि उनकी थ्योरी में अगली शीट पे दिखेगा। अब फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल ये सब स्कूल में आप पढ़ ही लेते हो, कॉलेज में यू कैन लर्न। ओके, टाइम भी बचाना है, मैं तो बोल भी खुला रहूंगा। ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दो चीजें होती है ना इसमें काइनेटिक्स में, एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एक होता है एनर्जी बैरियर। तो ही सेड कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एक जब ये सॉल्वेशन लैम्डा, इसमें सॉल्वेशन रीऑर्गेनाइज, जो सॉल्वेंट लगे हैं उसमें लाइगेंड्स लगे हैं, दे कीप डांसिंग, थर्मल एनर्जी है, सब कुछ है। कोई सॉल्वेंट ऐसे ओरिएंटेड है लाइक पॉजिटिव साइड, इस साइड, थर्मल एनर्जी विल मेक इट फ्लिप अराउंड, ऑल दोस थिंग हैपन इन रियल सॉल्यूशन। सो ही सेड कि जहां पे वो सॉल्वेशन एनर्जी ये जी के बराबर हो जाएगी तो एक मैक्सिमम आएगा,
he showed it into intramolecular electron transfer. Then he made also equation for activation free energy in heterogeneous electron transfer. तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा ये जो लैम्डा है, जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज का है, वही उसी के पास है लैम्डा, वो इम्पोर्टेंट है. Then he said ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशीज को OHP आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन जहाँ तक वो आ सकता है ना, आयन अभी बताया, उसकी जो पेनल्टी है उसको भी गिन लो, वो भी उसमें स्केल की हुई है लैम्डा से. देन उसमें जो पोटेंशियल, जो ड्राइविंग फोर्स है एक्सटर्नल, पोटेंशियल माइनस E0, बिकॉज E0 तो लूमो कंट्रोल कर रहा है, तो वो डिफरेंस भी लैम्डा से स्केल है उनकी थ्योरी में. सो ऐसे ही आगे क्वाड्रेटिक टर्म भी है. प्रॉब्लम इज दैट जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेटाबेस से लगाने पड़ते हैं तो पसीने छूट जाते हैं, होता नहीं है काम इतना आसान. जबरदस्ती कुछ लोग कर लेते हैं, यू पैरामीटराइज समथिंग एंड फिक्स इट. तो क्वेश्चन आया, एक तो इसमें कहाँ दिख रहा है, कोई मेटल दिख रहा है तुम्हें इसमें, लैम्डा सॉल्वेंट का, सिर्फ चीज को वहां तक लाने की. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो किसी के, मैं घर चला जाऊं, चाय पिलाना तो उसकी मर्जी है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो जो है वो तो मेटल डिसाइड कर रहा है, वहां तक पहुंचा दिया, उससे कैसे डिसाइड हो जाएगा काइनेटिक्स. कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं. वाई, जो इतनी दूर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोएक्टिव बल्क में है, फिर आ रहा है उधर, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी क्यों पूरी की कहानी कंट्रोल की. इस तरह के क्वेश्चन थे. सो फर्स्ट ट्राई टू somehow model whatever is कि मार्कस मॉडल में कुछ मॉडिफाई करते हैं. देन आई रियलाइज हमें थोड़ा उल्टा सोचना चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड साइड से सोचना चाहिए. उनके उसमें सोच रहे हैं इलेक्ट्रोएक्टिव के साइड. जब होमोजेनियस था, सभी इलेक्ट्रोएक्टिव और सभी एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, तो इट वाज ओके. जैसे कि व्हाट अबाउट इफ यू से कि जो बैरियर एनर्जी है, नॉट द सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव, मेजरली शुड बी कंट्रोल्ड बाय some solvation energy on the electrode side. Because solvent से क्या होता है, you have metal, then we told also first layer solvent की है. ये solvent ऐसे नहीं हो जैसे सीधे खड़े हुए soldiers की तरह, हाँ? कुछ शीर्षासन में खड़े हैं, कुछ टेढ़े खड़े हैं, कुछ बिल्कुल सीधे खड़े हैं. तो these are like बच्चे छोटे वाले, इस तरह से behave. तो thermal energy is also there. तो ये जो है, इसकी वजह से क्या होगा, जब वो पॉजिटिव डाइपोल जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मेटल से, नेगेटिव डाइपोल जा रहा है थोड़ा सा देगा, तो उससे क्या है, जो मेटल का जो फर्मी लेवल है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन ले दे रहे हैं कुछ तो वो फ्लक्चुएट करेगा. तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें वो जो फ्लक्चुएशन के समय एनर्जी है वो लूमो या हुमो से मैच कर गई. तो हमारी थ्योरी में है कि जब ये फ्लक्चुएशन हुमो लूमो से मैच कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. तो जो काइनेटिक फ्री एनर्जी बैरियर है, इस तरह से डिफाइन है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्कस. उससे फायदे बहुत है, बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया नैनो मटेरियल कर रही है, तो मेरा मेटल नैनो साइज में ले आया, रेट कांस्टेंट में क्या अंतर होता है, बोलते भी होता है अंतर. सो विद दिस अप्रोच, बिकॉज मेटल हैज बिकम नाउ प्राइमरी, आई कुड पुट इन कि मेटल को अगर मैं नैनो स्ट्रक्चर करता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा. और मेटल तो ऐसी चीज है, उसमें वैसे भी स्ट्रक्चर रहता है, जैसे इधर है स्टेप्स है. सो नॉर्मल मेटल डिपेंडिंग अपॉन अगर सिंगल क्रिस्टल भी लोग किस एंगल से कट किया है सिंगल क्रिस्टल को, तो उसमें स्टेप्स बन जाते हैं, एटॉमिक स्टेप. तो एटॉमिक स्टेप्स पे नॉन लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं वो काफी फ्लक्चुएट करती है. तो उसमें खाली एटॉमिक स्टेप्स ही नहीं बनते, सीढ़ियाँ, उसमें अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ईंटें लगा दे सीढ़ी में, कॉरोगेटेड टाइप बन जाएगा ना. जरूरी एक तो स्ट्रेट लाइन में लगा दो सारी ब्रिक्स, एक या कोई टेढ़ी तिरछी लगा दे, तो वो उसके अंदर किंग्स बन जाते हैं. तो जो किंग साइट है, दिस किंग साइट डज लॉट ऑफ इन कैटालिसिस, सारी की सारी कहानी उन पे ही ज्यादा होती है. दूसरी है फ्लैट साइट, जैसे ये है इधर स्टेज है, ये कहलाते हैं बासल प्लेन, और दूसरा कहलाता है एज प्लेन. तो उनकी इट इज नोन कि जो रेट कांस्टेंट है काफी डिफर करता है. पर प्रॉब्लम यह है कि उसमें एक तरह की स्टोरी नहीं है, कुछ रिएक्शन में वो एज प्लेन एनहेंस करता है, कुछ पे सप्रेस करता है. तो उन दोनों रिएक्शन में अंतर यही होता है कि किसी का होमो एक्टिव है, किसी का लूमो एक्टिव है. तो एक जो है एक में चार्ज बढ़ना हेल्प करेगा, एक में अनहेल्प करेगा. So that is what we have captured in our equations in the following. So बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, शायद मैंने कुछ बता भी दिए होंगे. व्हाट इज रोल ऑफ मेटल, मेटल का नैनो स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन मेटल,
मैं अलग अलग सॉल्वेंट का जो वो बदलता रहूँ डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, क्या असर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे? तो ये सब क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। एंड व्हाट इज रोल ऑफ सॉल्वेटेड आयन? वो जो पीछे डबल लेयर है वो भी क्या कुछ करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो वही है जो स्पीशीज इलेक्ट्रोड के क्लोज पहुंच गई, उन्हीं मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। व्हाट इज रोल ऑफ दिस डबल लेयर जो पीछे है? वो भी कुछ करेगी। वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट। देन व्हाट इज रोल ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव मॉलिक्यूल? मार्कस थ्योरी में अगर देखा होगा, कोई क्लियर एक्सेप्ट वो सॉल्वेशन स्फीयर, इलेक्ट्रोएक्टिव मॉलिक्यूल की क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि पूरा में स्कूल बीएससी में पढ़ाते आ रहे हैं, लूमो एमएससी तक होता है, और वो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। भाई लंच नहीं मिलेगा, अभी रुकवा रखा है, जाओ मत। मना किया हुआ किसी बच्चे को लंच नहीं देना। अभी अटेंडेंस लेंगे, सर ने बोला अभी बाहर सबकी अटेंडेंस लूंगा इसके बाद। नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे समझ के। ओके, जल्दी खत्म कर देंगे, टाइम देख लेते हैं, अभी है टाइम। तो नॉलेज की भूख हो तो ज्यादा अच्छा है, खा खा के तो लोग बीमार ही होते हैं। ओके, फिर हमने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले हमने कुछ थ्योरीज की, इसमें क्या ये जो कर्वेचर है लोकल मेटल का सरफेस पे, दैट कर्वेचर इज रिलेटेड टू ये जो उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, बिना कोई डीएफटी, बिना किसी क्वांटम डिटेल क्वांटम मैकेनिकल, उसको रिलेट कर दिया कि वर्क फंक्शन पे लोकल मेटल कर्वेचर का क्या इफेक्ट करता है। किया, डेटा से मैच किया, कर रहा था, पता है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई भी नैनो पार्टिकल कैसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लो, सबका स्टोरी लाइन वो कैप्चर कर सकते हैं। वेरी जनरल अप्रोच। सो दैट इज व्हाट इज डन। एंड देन व्हाट इज दैट, सभी कुछ बता दिया मैंने। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी है। ओके, सो मेटल का एक मॉडल है गैलियम मॉडल। वो ये गैलियम मॉडल कुछ नहीं है, बस ये है कि जो मेटल की सरफेस है उस पे वो एक, जैसे हम कहते हैं मेटल इज लाइक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई है पॉजिटिव, उसमें एक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इमेजिन करते हैं मेटल को। पर जो सरफेस पे होता है डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, सरफेस का बिहेवियर बल्क से अंतर होता है। ओके, तो जो सरफेस है, किसी महान साइंटिस्ट ने कहा था कि जो बल्क है वो तो अच्छे इंसानों या देवताओं को कंट्रोल करते हैं, जो सरफेस है वो डेविल कंट्रोल करते हैं। कि सरफेस को समझना सबसे मुश्किल होता है देन बल्क। पुराने ये थे। ओके, सो इसमें जो है ये जो है इसमें क्या है कि अंदर थोड़ा सा स्पिल ओवर इलेक्ट्रॉन है सरफेस के ऊपर, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहते हैं ना डिफ्यूज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही उसकी सरफेस पे, जैसे बेंजीन में दिखते हैं ना 5 इलेक्ट्रॉन और समथिंग, ऐसी सरफेस जो उसके इमीडिएट नीचे जो न्यूक्लियाई होंगी उन पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब कोई चीज बाहर दी जा रही है तो अंदर कम होगा, जेब में से 100 रुपया तुमको दे दिया, 100 मेरा कम हो गया ना, तो ऐसे ही उसका हाल है उधर। पर अब जब दो चार्ज सेपरेशन होता है तो इट विल बिकम लाइक ए कैपेसिटर। दो चार्ज को प्लस माइनस को थोड़ी दूरी पे ले जाओ, वो एक कैपेसिटर जैसा काम करेगा। तो हमने सिंपली उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस। अब कितनी दूर गया है, क्योंकि कैपेसिटर किसी को अगर याद है स्कूल में पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इज कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम। तो कितनी दूर है, अगर क्या मैं इसको जान लूं कि उसका डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये जो गैलियम लेयर है, ये जो पतली सी, उसमें उसका डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये कहीं रिपोर्टेड ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये था। फिर उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस का ये डिस्टेंस कौन सा डालूं मैं उसमें, तो एक स्क्रीनिंग लेंथ होती है, जैसे हमने डिबाय-हकल थ्योरी में पढ़ा ना, आयनिक स्क्रीनिंग लेंथ, एमएससी में पढ़ाते हैं, सीएसआर सिलेबस में, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, कोई मना नहीं कर सकता अगर एमएससी पढ़ी। सब यूनिवर्सिटी सीएसआर वाला सिलेबस जरूर पढ़ाती है, उससे ज्यादा नाम नहीं। तो उसमें एक स्क्रीनिंग लेंथ होती है। ऐसी जब इलेक्ट्रॉनिक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक स्क्रीनिंग लेंथ होती है, उसका नाम होता है थॉमस फर्मी स्क्रीनिंग लेंथ। वो डिपेंड करेगी, जैसे डिबाय उसमें करता है कि क्या क्या उस पर कितनी चार्ज डेंसिटी, आयनिक चार्ज डेंसिटी, उस पर डिपेंड करती है इनवर्सली। देन वहाँ टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर नहीं होता, बिकॉज इट्स मोर क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर की जगह क्या होता है, वहाँ जो है फर्मी एनर्जी घुसी होती है इसके अंदर। वहाँ पे थर्मल एनर्जी केबीटी आता है डिबाय-हकल में। ओके, यहाँ पे इसकी जगह फर्मी एनर्जी होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूला है। तो हमने बस यही किया, इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला बनाया और फिर उसके बोला कि अब इसमें कर्वेचर डाल दूं, तो कैपेसिटेंस जो अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ऐसे करूंगा
तो क्लाउड को फैलने की जगह मिल रही है। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा तो वो आपस में रिपेल करके श्रिंक हो जाएगा। तो वही अकाउंट बस कर लिया कि कर्वेचर से कितना हुआ है, क्लाउड फैल रहा है, कितना श्रिंक कर रहा है, उससे एस्टिमेट निकल आया। उससे आई कुड प्रिडिक्ट कि व्हाट हैपेंस टू वर्क फंक्शन और फर्मी एनर्जी, बिकॉज वर्क फंक्शन फर्मी एनर्जी रिलेटेड है, एक कांस्टेंट से रिलेटेड टू द थिंग। तो ये वो कैलकुलेशन है जिसमें हमने वो किया, मेटल लिया, उसको जूम किया, फर्दर जूम किया, उसको एक डिस्टेंस पे ले आए, इसका एक डिस्क बना लिया थॉमस फर्मी लेंथ का, और बोला उस डिस्क में एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। मतलब मेरी इतनी जगह है, एक कुर्सी है, इसके अंदर दूसरा नहीं बैठ सकता, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां बैठा है। उसका एरिया निकाल लिया, फिर उसके बाद पूछा व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस काइंड ऑफ कैपेसिटर। अगर हाफ ले रखा है एक ही इलेक्ट्रोड, सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कर रहे हैं तो टोटल, ये सेल्फ कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए। एंड दिस वी से दिस इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालने का पेनल्टी है वो यही। तो इस ढंग से उसको एस्टिमेट कर लिया, फिर उसमें एरिया डालना था। तो वो एक इनिशियली समझ नहीं आ रहा था कौन सा जाएगा। फाइनली वी रियलाइज दिस एरिया हैज टू बी दिस फर्मी डिस्क का एरिया। वो डालते ही सब कुछ लाइन पे वर्क फंक्शन का फार्मूला बन गया। नॉट प्लेनर, प्लेनर के लिए भी नहीं था लिटरेचर में कोई फार्मूला, फिर कर्व के लिए भी मिल गया, फिर किसी ने कभी कुछ एक एडॉक बना रखा था उससे भी कम। सो वेयर वी आर गोइंग, हाँ, तो ऐसे कर्वेचर कैसे देखेंगे, कोई चीज कर्व है तो उसमें दो मेजर होते हैं। एक होता है मीन कर्वेचर, जो सर्किल डालें उस पर, उसका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दूसरी डायरेक्शन में सर्किल डालें उस पर, क्योंकि अगर सरफेस जरूरी थोड़ी स्फेरिकल है, दोनों बराबर हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सैडल हो सकती है घोड़े के ऊपर वाली, तो कोई ऐसे जाएगा कोई ऐसे। तो कर्वेचर दो पॉइंट से हम किसी लोकल साइड का शेप को जान सकते हैं। तो उसमें एक पैरामीटर है मीन कर्वेचर विच इज K1 + K2/2। दूसरा है गाउसियन कर्वेचर, इनका प्रोडक्ट। ये दो क्वांटिटी ऐसी है, इससे किसी की भी लोकल शेप के बारे में कहा जा सकता है। जब इसका इंटीग्रल ये सब कर सकते हैं तो टोपोलॉजी में ब्यूटीफुल थ्योरम है, वो नंबर ऑफ पोर, नंबर ऑफ हैंडल से कनेक्ट करता है, वो बहुत ईजी है, लाइक पोरस सिस्टम को समझ सकते हैं उससे। तो यही है कि जब इस दोनों कर्वेचर जीरो है तो फ्लैट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सैडल बन जाएगा, एक केस में दोनों नेगेटिव कप बन जाएगा, एक में कैप बन जाएगा। इस तरह से सारी शेप जो भी है इनके इंटरमीडिएट सब क्रिएट की जा सकती है सिर्फ कर्वेचर से। तो हमने कहा हम अपनी इक्वेशन को कर्वेचर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे फॉर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हमने किया उसके बाद हम वी कुड फाइंड फर्स्ट इक्वेशन, आज तो ये भी नहीं यूज किया, या आ गया, चलिए। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम है जो ये गैलियम है उसका डाइलेक्ट्रिक, और मेटल का अगर डाइलेक्ट्रिक कहोगे बहुत कंफ्यूजन, सर्च ट्राई टू सर्च गूगल डाइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल, कोई इन्फिनिटी बोलेगा, कोई जीरो बोलेगा, कोई कहे वाटर से ज्यादा होगा, वाटर से कम होगा। पर हमने क्या किया, इसको ये फार्मूला जब मिल गया, मुझे यह है वर्क फंक्शन, इसको इक्वेट कर दिया एक्सपेरिमेंटली मेजर वर्क फंक्शन से 111 प्लेन वाला बासल प्लेन जो होता है आइडियलाइज, उसके वर्क फंक्शन इक्वेट कर दो, जो भी उसमें से ये निकलेगा एप्सिलॉन बराबर करने के लिए वही मेरा डाइलेक्ट्रिक है। ऐसी टेबल बना दी पूरे की, तो सबका रास्ता खोल दिया कि गैलियम में डाइलेक्ट्रिक ये होगा। उसके बाद अब जब वो पता लगे ये मेरा कर्व सरफेस हो गई। ये जो थॉमस फर्मी स्क्रीनिंग लेंथ है ये मीन कर्वेचर का इनवर्स लेंथ का डायमेंशन है, इससे करो ये 1 है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, सेकंड ऑर्डर टर्म कर्वेचर। मोस्ट ऑफ द केसेस इवन फर्स्ट ऑर्डर टर्म से ही काफी कुछ मिल जाता है, एक्सेप्ट फ्यू सिचुएशन वेयर यू हैव टू अकाउंट फॉर सेकंड। और फिर कोई एक PRL का पेपर था, उसने ऐसा कुछ रिलेशन दिया था स्फेरिकल नैनो पार्टिकल का वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व्ड है, पर उसने एक आर्बिट्ररी पैरामीटर छोड़ दिया था ए, तो उसका भी मीनिंग दे पाए हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट ए पैरामीटर इज 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम जो हमने निकाले। और ये वैल्यू जो वेरियस लोगों ने सिमुलेशन लिटरेचर में बोला ये वेरी करती है, हाफ कोई 3/8 बोला, तो इसी रेंज में सारी वैल्यू आ जाती है। तो आई कुड गिव ए रियल रीजन कि क्यों थोड़ा ये अलग अलग होता है मेटल बनाने से, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो अब जब हमने ये वर्क फंक्शन बना लिया तो आगे की कहानी सारी कॉम्प्लिकेशन शायद ये कल नहीं दिखाई थी स्लाइड। इलेक्ट्रोड पे जितनी कॉम्प्लिकेशन आती है, अगर मैं कोई थ्योरी बना रहा हूँ उन सबको समहाउ आई शुड बी एबल टू एड्रेस।
विद सम मॉडिफिकेशन इन थ्योरी। एक तो क्रिस्टोग्राफिक तो हमने बता दिया है कि अलग अलग क्रिस्टल प्लेन पे अलग अलग स्टेप डेंसिटी होती है, थोड़ा किंग डेंसिटी में भी मटेरियल डिपेंडेंट अंतर होता है, तो इसलिए चीज़ों में अंतर दिखता है। तो एक क्रिस्टोग्राफी, एक होगी टोपोग्राफिकल। ये जब टोपोग्राफी रफनेस एक्सेट्रा, जो मैं स्टेप्स बना रहा हूँ एक तरह से रफनेस क्रिएट कर रहा हूँ। टोपोलॉजिकल, अगर मैं छोटे छोटे पोर बना दूं, लाइक मेटल कार्बाइड में से मेटल निकाल दो, कार्बन का स्ट्रक्चर रह जाएगा, तो वो भी कंडक्टिंग ही है और सेमी कंडक्टिंग, तो उसमें वो टोपोलॉजिकल छेद उसी जो थॉमस फर्मी लेंथ है उससे कंपेरेबल बना सकते हो, बहुत फाइन पोर। तो सुपर कैपेसिटर में बनाते हुए साइंस के पेपर भी छापते हैं उसके। और कंपोजिशनल, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली डाल के भी इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी बदल देते हैं, और उसके ऊपर सॉल्वेंट डाल के भी बदल सकते हैं। और कुछ एलॉय भी बनाना पसंद होता है, नैनो में लोग बनाते हैं, अंदर का मेटल कुछ बाहर का मेटल कुछ, और या दोनों पड़ोस में लगा दिया, एक का कुछ एक। प्रोफेसर गांगुली भी बता रहे थे सेमीकंडक्टर पे प्लेटिनम के पॉइंट लगा दो, कुछ अलग से बिहेवियर आ जाते हैं उसका। तो ये सब गेम खेलते रहते हैं जो केमिस्ट हैं, और कोशिश करते हैं कि सबसे स्टेबल बना दें। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये है, इसका नाम है BDM थ्योरी, बोक्रिस देवनाथ और मुलर। जिस साल में पैदा हुआ था उसी दिन थ्योरी तभी बनी थी। तो नाउ यू नो माय एज, 60 ईयर ओल्ड। तो ये इसमें नीचे मेटल है, हमने बस इसको ऐसे ही मॉडिफाई किया, जो मेटल है उसमें जैलियम मिला दिया अपने ढंग से। जैलियम का कुछ है, कुछ कैलकुलेशन है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमने अपने अप्रोक्सीमेशन से एक सिंप्लीफाइड जैलियम का मॉडल बना लिया था, उसकी बेसिस पे वो वर्क फंक्शन प्रेडिक्ट किया। फिर ये जो हमने बोला फर्स्ट डाइपोल लेयर है, फिर ये सॉल्वेटेड आयन लेयर, फिर डिफ्यूज लेयर बिकॉज थर्मल एनर्जी और आयन का कंपटीशन। तो ये भी हमारी थ्योरी में अंदर जाती है कि डबल लेयर का क्या इफेक्ट होगा उसके। और फिर बेसिकली इसमें यही था कि जो डाइलेक्ट्रिक है जो एकदम बिल्कुल मेटल के पास होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत होता है। अगर तुम डिवाइड कर दो, लाइक ये नैनोमीटर टाइप है डबल लेयर का रेंज, तो नैनोमीटर को 1 वोल्ट से टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज से कर दो, कितना होगा 10⁻⁻7 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अब बड़ा देखना चाहते हो 10⁻⁹ वोल्ट पर मीटर। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सच में उधर हाथ लगा पाओ, इलेक्ट्रिक जितनी लाइनें जा रही है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोड की सरफेस के पास। तो इसीलिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ना फोड़ना है, उसको ले जाओ इलेक्ट्रोड पे, तोड़ देगा, जोड़ भी सकता है, सब कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत यूजफुल साइंस है, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रोड पे ले जाके, बिकॉज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना नए नए केमिकल डाले रिफ्लक्स करो 4 दिन तक, उसमें सोडियम भी डाल दो, लिथियम भी डाल दो, सब कुछ डाल के तोड़ो बॉन्ड। नहीं टूट रहा तो फिर जोड़ने के लिए कुछ और डाल दो। एक आदमी केमिस्ट बहुत अच्छा लगता है उनको। बट इलेक्ट्रोड पे बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसमें अगर एसिमेट्री लानी है तो स्ट्रैप को थोड़ा रफ बना दो, ये किंग स्विंग्स बना दो, तो कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो मॉलिक्यूल में कहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहीं कम, उस पर आके बैठ जाएगा, बैठना भी तो पड़ेगा तभी तो तोड़ेगा ना उसे, तो वो कैटलिस्ट वजह से बन जाते हैं ऐसे। तो यही कहानी है। तो इस ढंग से हमने क्या किया, हमने थोड़ा इसको अल्टरनेटिव बदल दिया। पहले इसके लिए निकाल लिया, अभी 6 मिनट में हम खत्म करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो आई विल नॉट डिले यू फॉर। तो इस ढंग से किया। देन अगेन वी काइनेटिक पे आ गए। ये सबको पता है, सबको पढ़ाया जाता है, बीएससी में भी पढ़ाते हैं, एमएससी में पढ़ाते हैं, शायद स्कूल में भी पढ़ा देते हैं 11वीं 12वीं में कभी, कि कोई भी रिएक्शन करने के लिए एक बीच में रिएक्टेंट की एक एनर्जी लेवल है, प्रोडक्ट की एक एनर्जी लेवल है, उसको एक एनर्जी बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो एनर्जी उसको मिल जाएगी तो हो जाएगा, वो एनर्जी बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी से ज्यादा होगी तो कहेंगे भाई उसमें कैटालिस्ट डालो, हमसे ये जा ही नहीं रहा है रिएक्शन। तो इसलिए कैटालिसिस तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये बैरियर बहुत ऊंचे हो जाते हैं। ओके, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या लिखा हुआ है? ओके, हमारे मॉडल में ये होता है वर्क फंक्शन जो है सॉल्वेटेड मेटल का, उस पर मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली डाल दोगे तो नया आ जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं जो इनकी एनर्जी लेवल मैच करने के लिए कितना मुझे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डालूं फर्मी में से या निकालूं जिससे लूमो या उमो कोई मैच हो जाए, वो ये डेल्टा फैक्टर वो इंडिकेट करता है। ये एनर्जी बैरियर हो गया कि किसी जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डाइपोल लगे हुए हैं मेटल के ऊपर, थर्मल फ्लक्चुएशन से ऐसा कन्फिग्रेशन बने कि उसका एनर्जी लेवल लूमो या हुमो से जब मिल जाएगा ले जाओ इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यही बस किया इस थ्योरी में।
थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिख रहा है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये आगे प्री फैक्टर है इसका kBT by h, h इज प्लैंक कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर बन जाता है। थर्मल एनर्जी को प्लैंक से डिवाइड करेंगे, वो क्या एनर्जी सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, और जो ये डिस्टेंस है अप टू विच इलेक्ट्रॉन हैज ट्रैवल LH कह दो, तो ये मुझे हेटेरोजीनियस रेट कांस्टेंट मिल बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे अभी नहीं मिल रहा लंच, जाके क्या करोगे, क्लास है कोई? अच्छा चलिए ठीक है। ओके, सो दिस इज द कार्टून विच वी मेड। ये मेरा फर्मी लेवल है, तो अगर यहाँ लूमो है तो ये थोड़ा सा अगर इसको इलेक्ट्रॉन समहाउ ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर क्या करना, फ्लक्चुएट होना है, इससे तब ये बराबर हो जाएगी। आधा फ्रैक्शन तो नहीं देगा उसको, तो फ्लक्चुएशन से वो लेवल आ जाए किसी ढंग से, तो हमने एस्टिमेट कर लिया कि कितना होना चाहिए। ये इक्वेशन है, ये मेरा बियर का वर्क फंक्शन है, और ये मैंने कुछ कहा कि इलेक्ट्रॉन लेने देने का इसमें डाल दिया डेल्टा में। ये मेरा फर्मी एनर्जी है, पेनल्टी हो जाएगी लेने देने की। लूमो के लिए अलग है, हुमो का अलग है, बिकॉज साइन का इशू है। तो इस ढंग से जब बराबर होगा उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इससे बैरियर एस्टिमेट कर लिया। ये डेल्टा जो हमारी इक्वेशन में जा रहा है, ये नया एक्टिवेशन फ्री एनर्जी का हो गया फार्मूलेशन। इसमें पॉसिबल है बहुत आसानी से, जो इलेक्ट्रोएक्टिव में के चारों ओर जो डाइपोल्स है उनकी वजह से, उनके फ्लक्चुएशन की वजह से उसकी लूमो हुमो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एंड जब भी रैंडमनेस ज़्यादा होती है, ये प्रिंसिपल है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स जब होते हैं ना गॉसियन फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक मीन वैल्यू होगी, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो बहुत कम होते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, फुल 99% लेके आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं वो पढ़ेंगे नहीं, भगवान भी उनको मदद नहीं कर सकता, उसको तो टीचर नाको चने चवाले तो भी पास नहीं कर पाता, तो उसको छोड़ना ही पड़ता है वहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी में तो होते हैं, आपका पता नहीं। तो वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, टीचर कुछ भी कर ले, कितना भी पढ़ा ले, अच्छे से भी पढ़ा ले, तब भी कुछ ऐसे होते पढ़ेंगे नहीं। कुछ 100 स्टूडेंट है, किसी का ऐसा भी हो जाता है इवेंट फैमिली में, कोई एक्सपायर हो गया, कोई बीमार हो गया, दैट कुड बी आल्सो रीजन। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसी एनर्जी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो इस ढंग से उसको अकाउंट कर सकते हैं। तो फिर यही वही इसमें डाइपोल डालने, कितने उसने चार्ज दिया, कितना लिया, उसका ओरिएंटेशन क्या, उससे एनर्जी एस्टिमेट कर लेते हैं फार्मूले बना के। ओके, और फिर उसके बाद फिर एंड में तो यही है कि अगर मैंने कुछ कुक किया है, उसका टेस्ट कैसा है वो तो खाने से पता लगेगा। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरफ देखते हैं, कहीं मिल जाए लिटरेचर में, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट आसान नहीं होते, हम अपनी लैब में सब कुछ नहीं कर सकते। सिंगल क्रिस्टल ऑफ इतने सारे मेटल का 111 लेना है या क्या करना है, थैलियम, टैंटेलम, निकल, रुथेनियम, इरिडियम, पैलेडियम, उस सब का जो डेटा था एक जगह डाल दिया, नीचे उनका वर्क फंक्शन डाल दिया, हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, एक्स एक्सिस पे वो डाल दिया। तो इससे एक्सचेंज करंट डेंसिटी वो K0 से रिलेटेड है, वो प्लॉट कर दिया। एक केस में ये था, फेरस फेरिक का केस था, उसमें लूमो एक में एक्टिव था, एक में होमो एक्टिव था। जहाँ लूमो एक्टिव है वो ऐसा जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है इसके रिस्पेक्ट में, दूसरे में नेगेटिव है। तो ये वो आ गया। ये लिटरेचर में बहुत सारा डेटा है, कोई कहता है ये वर्क फंक्शन से बढ़ेगा, कोई कहता है घटेगा, कंफ्यूजन है। तो ये बताता है लूमो एक्टिव है या होमो एक्टिव, उसके अकॉर्डिंग उल्टे ट्रेंड ले लेते हैं। तो एक तरह से जो डाइकोटॉमी थी काइनेटिक की, और काइंड ऑफ इन्वर्जन है, एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नीचे जा रहा है, इन्वर्जन इन रेट कांस्टेंट हो गया, तो वो एक्सप्लेन हो गई, रिजॉल्व हो गई। कुछ इसमें से ऐसे भी हैं मटेरियल जो कि रेफरी बोला रहे उसका ऑक्साइड बन जाता है, ये सब हमने सबको डाल दिया। मैंने कहा कि बस ट्रेंड देख लो, अच्छा एक्सपेरिमेंट बाद में देख लेना। और फिर उसके दूसरा हो गया जो स्टेयर्स है, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब सब लोग कहते हैं जो स्टैप्स किंग्स हैं उससे मेरा रेट कांस्टेंट घटते बढ़ते रहते हैं। ओके, इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में ज़्यादा स्टेप ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छा कैटलिस्ट बनेगा ऐसा। तो एक थ्योरी एक अभी उसमें होता क्या है, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्डेड है। कॉपर 111 फ्लैट है, उसके ऊपर गोल्ड की लेयर लगा दी, उसमें कुछ ये गोल्ड की वजह से स्टेप्स बन गए। ये टोपोग्राफी है, ऊंचाई दिखा रहा है ग्रे स्केल में, ये उसका लोकल वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब जो हम कह रहे थे कर्वेचर डिपेंडेंट वर्क फंक्शन है, मुझे दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में भी। एसटीएम मेजरमेंट्स है। ओके, तो बहुत कुछ। अब ये जो चीज़ है ये बहुत चीज़ों पे इलेक्ट्रिक डबल लेयर का जो एड्सॉर्प्शन इफेक्ट करेगा, चार्ज ट्रांसफर,
कैटालिटिक एक्टिव, बहुत चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम वर्क फंक्शन वेरिएशन समझ जाते हैं और उसको अपनी काइनेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो बहुत अच्छी थ्योरी मिलती है। अब ये स्टेप कैसे काउंट करें, स्टेप भी तो काउंट करने पड़ेंगे, कितनी डेंसिटी है। तो बोला ये 10 मीटर में इसमें 20 स्टेप है, तो यू कैन से 20 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे ही पेट्रोल पे गिनते हैं। स्कैन कर लिया एक लाइन में, कितनी बार वो स्टेप दिखे काउंट कर लिया, या उसका टेरेस विड्थ देख ली, उससे काउंट कर लिया। तो जो भी है ये एक्सपेरिमेंटली अच्छे से मेजर करते हैं। तो मेरा जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है फाइनली दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्टेप डेंसिटी, तभी वो काम के होंगे। कुछ आलतू फालतू की क्वांटिटी डालेगा तो चेक नहीं कर पाएगा। सो हमने वो रिजल्ट बनाए। फिर किंग डेंसिटी का फार्मूला, ये जैसे एच स्क्वायर, जो ये जो फ्लक्चुएशन है एच पे टेढ़ी मेढ़ी ईंटें लगा दी, जो उसमें से जो एटम एक आगे एक पीछे, वो किंग्स है। ओके, उस किंग की कितनी विड्थ है, वो थोड़ा मेटल में सबके अपने अपने इंटरेक्शन है, किसी की बहुत चौड़ी होती है, किसी की पतली है, वो भी एक इंडिकेटर है। तो वो मिल जाता है एच स्क्वायर, ये फ्लक्चुएशन। ए है जो लैटिस पैरामीटर होता है, किसी भी क्रिस्टलोग्राफी में लैटिस पैरामीटर सब नहीं सुना, उससे स्केल कर दो, किंग का मिल जाता है। रेफरी ने एक बार पूछ लिया था इसका फार्मूला बता सकते हो, क्रिस्टलोग्राफी में काम करता था, हम तो नहीं करते, हम तो उतना ही पढ़ते जितना काम आएगा। ओके, फिर उसके बाद ये पहले तो वर्क फंक्शन का किंग डेंसिटी डिपेंडेंट, स्टेप डेंसिटी डिपेंडेंट फार्मूला बना लिया। एक रिजाइन में वो लीनियर रहते हैं, ऐसे अलग अलग मेटल के अलग अलग स्लोप है, वो यहाँ से मिल गया किंग डेंसिटी। और जो ये स्टेप का हाइट है एच, सिंगल स्टेप है तो उसका लैटिस पैरामीटर हो गया, और ये ए इज लैटिस पैरामीटर, ये नंबर ऑफ स्टेप डेंसिटी। वर्क फंक्शन स्टेप डेंसिटी बढ़ाने घटाने से क्या होता है वो इसमें फार्मूले में आ गया। जब तक वो मिलियन स्टेप पर सेंटीमीटर नहीं आते कुछ नहीं होता है, कम स्टेप पे दिखता नहीं है चेंज, लार्ज पे दिखता है। वो डिपेंड करेगा कि हम क्रिस्टल लेके उसमें कौन सा कट लगा रहे हैं, किस एंगल पे, तो स्टेप बढ़ और घट सकते हैं। ओके, सो ये वो है। पर कुछ मेटल है जैसे प्लेटिनम और टंगस्टन, वो थोड़े अलग बिहेव करते हैं, उनका थोड़ा ये किंग डेंसिटी थोड़ी हाई आती है। तो वो क्या होता है, एक डेंसिटी के बाद उल्टा जाने लगती है। प्लेटिनम अच्छा खासा नीचे जा रहा था, सबकी तरह लीनियरली बीच में उठने लगा। ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है साइंस में, कोई चीज रास्ता बदल दे तो और अच्छा लगता है। तो वो भी एक्सप्लेन हो जाता है हमारी थ्योरी से, किंग डेंसिटी। वो थोड़ा नॉन लीनियर वर्जन थ्योरी है, फार्मूला नहीं दिखा रहा, टैन हाइपरबोलिक के टर्म में लिखा हुआ है, तो पता नहीं कितने लोग मैथमेटिक्स लाइक करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा और हमारी थ्योरी की लाइनें पड़ी हुई हैं, सब चीजें रास्ते पे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में डाल देते हैं फिर, क्योंकि हमने अब थ्योरी जो बनाई थी वर्क फंक्शन, ये जो कार्टून अच्छा सा है, ये बोल रहा है जो किंग का गड्ढा है वहां पे होमो से, ये क्या है ऑक्सीडाइज स्पीशीज है, वो प्रेफर करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कौन सा होमो वाला, हाँ होमो लूमो का डिपेंड कर रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज है उसका होमो एक्टिव है या लूमो एक्टिव है, दो ही रास्ते हैं, होमो लूमो, कहाँ जाए। तो जो ये जो है जो कॉन्केव साइड से जहाँ थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी लो हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, नहीं हाँ बढ़ेगी, लो हो जाएगी, कंफ्यूज खुद ही हो गए। ओके, तो उसमें क्या होगा, एक को फेवर करेगा और जो उठा हुआ साइड है उस पर दूसरे को करेगा। ये डेंसिटी जो कि खाली कर्वेचर देखते हुए हम बता सकते हैं कौन सा साइड पे क्या जाएगा। तो कुछ रेस ये जो इसका जो बासल प्लेन है, प्लेन है, तो कहीं पे ये रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है। लिटरेचर देखेंगे हर तरह का डेटा मिलता है, कोई कहता है इधर जाता है, कोई कहता है उधर जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है क्यों इधर जा रहा है, क्यों उधर जा रहा है। सो दिस इज थ्योरी, ये इसका फाइनल स्टेज ऑफ पब्लिकेशन में है। फिर हमने और डेडली काम किया, हमने कहा सच में अगर थ्योरी में दम है तो कोरोना वायरस पे लगा के देखो। उस समय स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा था थियोरेटिशियंस के लिए, DST का ग्रांट का, तो थोड़े से पैसे ले लिया, पैसे लिए तो कुछ बना के तो देना ही पड़ेगा ना। फिर हमने उसको कहा कि जो कोरोना वायरस है उसका जो इनएक्टिवेशन प्रोसेस है, जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें जो होमोलूमो ऑर्बिटल है, वो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो हमने अब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काइनेटिक का रेट निकाला। तो देन दिस इज द सेम आइडिया, ये मेरा नैनो पार्टिकल है, ये नैनो पार्टिकल पे अच्छा काम होता है। सुना होगा ना, जैसे कॉपर की सरफेस पे साफ रहती है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, उस पर बैक्टीरिया वायरस मर आ जाते हैं।
मंदिरों में भी दिखते हैं ना सब, तांबा पीतल। घरों में हम स्टील लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, जिन पे बैक्टीरिया ऐसा आराम से रहेंगे। तो जो पुराने लोग हैं अपने पीतल के बर्तन, तांबे के, तो वही चीज़ हमने कोशिश किया जानने की। ये वो अलग अलग मेटल हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, अलग अलग इनकी लाइनें हैं। ये डिग्री ऑफ इनएक्टिवेशन कोरोना वायरस के लिए कैलकुलेशन। तो ये कुछ डेटा भी मिल गया हमें डिग्री ऑफ इनएक्टिवेशन। इसमें सिल्वर 5 नैनोमीटर वाला है, कॉपर 10 नैनोमीटर का पार्टिकल लेके किया था एक्सपेरिमेंट। मीन साइज है पार्टिकल का, तो उनके पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं विद सो मच एरर बार। तो हमारी लाइनें आ रही हैं इस इक्वेशन से, उसी के आसपास में, एटलीस्ट उसकी बार तो टच ही कर ही रही है। सो वे प्रॉब्लम विच अपीयर सो कॉम्प्लेक्स कोरोना वायरस, तो ये बताता है कि सर्टेन जो नैनो पार्टिकल बना के मैं कर्वेचर इंक्रीज डिक्रीज करके कोरोना वायरस को जल्दी मार देता हूँ। काफ़ी लोगों ने किया भी, कॉपर पार्टिकल डिपॉजिट कर दिए डिवाइसेस पे, सब किया है। प्रोफेसर गांगुली बता देंगे। तो वो उस ढंग से भी कंट्रोल करते हैं वायरस को कि कैसे। डोर नोब्स पीतल का लगाओगे, हैंडल ज़्यादा अच्छा है, मर जाएगा बैक्टीरिया वायरस शायद। कितना रह गया टाइम? ओ ज़्यादा ले गया, ठीक है, यहीं पे आप कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, ये तो कल देख लिया आपने। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। सो लाइक इफ यू डू जनरल थ्योरी, आइडिया ये है बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। डरो मत, अगर नोबेल प्राइज भी किसी को मिल गया किसी थ्योरी पे, उसकी भी थ्योरी बदल दो। जितना बोल्ड होगे, या तो डूबोगे या तैरोगे। तैरोगे तो लोग अच्छा कहेंगे, वाह वाह, डूब गए तो क्या कुछ और करेंगे किस, फिर तैरना तो आता ही है इतना। सो दैट यू पीपल शुड सी, एंड कोशिश करो 10% बोल देना कि 10% समझ आ गया तो आप सब अच्छे हैं फिर। और गूगल सर्च वर्च करके 20% बोलोगे तो बहुत अच्छे। अगर इधर बैठ के सुन सके और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो आप कुछ आप में से रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर ऑडियंस। 6 मिनट ज़्यादा ले लिया, मैं भूल गया लास्ट में। मैं 1:30 बजे ख़त्म करना चाहता हूँ, पर आई थिंक लंच तो नहीं। Thank you, sir, for this enlightening and pleasant lecture of yours. I now request you all to join us for the lunch to be served in the dining hall. I also request you all to assemble in room number 201 of the ABB building for visit at lab, visit of labs at School of Liberal Arts and Sciences.